So I think we are live. Is my voice clear? All of you? अरे यार, I'm unable to see your comments. Good morning, good morning. Is my voice clear? Am I audible? All of you, am I audible? अरे यार, what is happening? I'm not seeing your comments. Yes, sir. Yeah, very good. So voice is clear, na? Great. So I'm respecting your time. As I said, the class is starting at 11 o'clock. I'll start sharply at 11 o'clock. And I expect strict discipline in class. मतलब अगर हम 11 कोई भी टाइम है, if the time is given, try to attend exactly at that time. Okay? Anything more? अभी start करते हैं सर. बहुत बढ़िया सर. And what we do is we'll form a separate group for this. आपको description में notes will be given. So there is no problem at all. Okay? Sir, నేను క్లాస్లో ఉన్నా సార్. అవునవునవును, నేను క్లాస్లో ఉన్నా సార్, నేను చెప్పిండ్రు నేను. ఓకే 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 రైట్ ओके एंड सर मैंने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर्स से क्लियर हो गया सर मैंने अप्लाइड नहीं की यस यस डेफिनेटली साउंड नहीं आ रहा है नो साउंड ओ माय गॉड इज माय वॉइस क्लियर थोड़ा अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाओ बढ़ाओ प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर डिवाइस स्लो है तो एक सेकंड मैं देखता हूं आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम आ रहा है ना या अभी बोलो ऑल क्लियर थैंक यू कोई बात नहीं सर एक्चुअली हमारे यहाँ तो देर इज सम प्रॉब्लम तो सुबह से पावर ऑफ हो गया फिर भी विल डू इट नो प्रॉब्लम लाउड एंड क्लियर एक्सलेंट चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग सर क्योंकि आई वांट कि योर टाइम इज नॉट वेस्टेड दैट इज माय मेन एम तो अभी स्टार्ट करते हैं सर सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस हम क्या करने जा रहे हैं ये बताता हूँ सर अभी मैं बताता हूँ मित्रों आई विल कवर थ्योरी whatever theory is required, I'll cover along with numericals. But please note down that it will not be covered in a very detailed, minute manner with all derivations. That is not possible. But definitely it will be covered in a conceptual way. Definitely it will be covered in a conceptual way. There is no problem with that. ठीक है सर whatever is required मतलब examination point of view से in a given short span whatever is required will cover so I'll be covering theory and numericals so first I have taken up in applied thermodynamics part and this course is important not just from a gate mechanical thermodynamics point of view but it is equally important from gate XC के लिए in gate XC you have applied thermodynamics that is Rankine cycle Brayton cycle डीजल साइकिल ऑटो साइकिल एंड साइक्लोमेट्री सो आपको एक्सी के लिए आई थिंक अराउंड 7-8 क्वेश्चंस का फायदा होगा सर यहां से इस कोर्स से बहुत फायदा होगा एक्सी के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट में तो आता ही है डेफिनेटली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट ये तो आता ही है सर डेफिनेटली इट विल कम so there is no problem and it is a very short and sweet course so psychrometry questions will come pakka for sure so what is my approach towards this so first I'll be covering in RAC that is refrigeration and air conditioning first I'll take care of basics then after basics dekho sirs then after basics I'll go to
vapor compression cycle. After vapor compression cycle, I'll give a brief idea of vapor absorption cycle. Then we'll be discussing gas refrigeration cycle. Gas refrigeration cycle. After that, I'll be discussing some properties of refrigerant, that is desirable properties of refrigerant. Then we will be moving to psychrometry, which is the basis for your air conditioning. This is the sequence of the flow of this particular course. So how many marks are we expecting in what I say mechanical engineering gate? So generally VC cycle pe maybe 2 marks or 1 mark, psychrometric pe maybe 2 or 1 marks. So we can expect around 2 to 4 marks from this course. We can expect around 2 to 4 marks in this course. Very good, sir. And one more thing is, so for the next 2 days, I am not available. So I'll be continuing from 2nd November. Continuously, I'll be taking, regularly, I'll be taking from 2nd November. 2nd तो Sunday है ना, तो I think I'll be starting from 3rd November. अब रेगुलरली लेता हूं सर. आज टुडे इज इंट्रोडक्शन, तो आज स्टार्ट करेंगे, आज बेसिक्स कवर करेंगे, एंड फ्रॉम 3rd November आई बी टेकिंग रेगुलरली. तो आप बताइए सर, so will 10:30 1.5 hours का क्लास ले लेंगे सर, 10:30 to 12 o'clock, will that be fine? 10:30 to 12. Now I am telling you, some students said XC का डेप्थ दे दूंगा सर आपको. साइक्रोमेट्री में जो डेप्थ आता है, साइक्रोमेट्री में जो XC का डेप्थ आता है, दैट आई विल कवर सर. सो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो. लेकिन एक ही मेरा एक प्रॉब्लम है सर, इफ यू पीपल आर नॉट सीरियस, अगर आप सिंसियर नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, तो मेरा मोटिवेशन भी कम हो जाएगा, एंड आई विल बी लूजिंग इंटरेस्ट, आई मे बी फोर्स्ड टू स्टॉप. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इज इट ओके सर? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो हम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे. चलिए सर, shall we start, my dear loving students? So do you have any doubts? And डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. विल दैट बी फाइन? विल दैट बी फाइन? सर आप एक जनरल डाउट सेशन रख दीजिए. चलो अभी अभी रख लेंगे, एक 5-10 मिनट. क्या डाउट्स है सर आपके? Someone said, like, is the crash course plus PAQs? Yes, I'm not saying that it will reach take you to the top level, but definitely it is sufficient to clear the examination. Is it okay, sir? No. अभी हम start करें सर. So let us start the subject in the name of Almighty God. जो भी है, आप जिससे भी विश्वास, जिस पे भी विश्वास करते हैं, उनके नाम से आप स्टार्ट करो. मैं तो ऊपर वाले पे विश्वास करता हूं. आई एम स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ गॉड ऑलमाइटी. विल दैट बी फाइन मित्रों? विल दैट बी फाइन? बोलो एक बार ग्रीन सिग्नल, ठोको ताली एक बार, थम्स अप या फिर जो भी सिंबल मार दो. स्टार्ट करेंगे सर. मित्रों, सुबह से पावर नहीं है सर, यहां पे सुबह से पावर नहीं. హలో, ఎస్ చెప్పండి. ఓకే, నేను క్లాస్లో ఉన్నానండి. నేను క్లాస్ వెనక కాల్ చేస్తాను. ఓకే, కొంచెం నేను 2 o'clock వరకు బిజీ అండి. ఓకే, నేను క్లాస్లో ఉన్నానండి. ప్లీజ్ ఓకే, నేను మీటింగ్ పెట్టి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఎస్. सो अभी हम हाउ मेनी लेक्चर्स, ये तो बता नहीं सकता हूं कि साइकिल्स विल टेक अराउंड, सारे साइकिल्स, रैंकाइन ब्रेटन ऑटो डीजल, these cycles will take around 16 to 18 hours. और ये एक because I have to cover VC cycle and psychrometry, these may take around 12 to 14 hours. Overall I can say 30 hours में हो जाएगा सर. Will it be okay? Is this okay? चलो अब चैनल सब बताऊंगा सर. फर्स्ट आज क्लास देख लीजिए. आई विल शेयर एवरीथिंग सर, आई विल गिव एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट. चलो, सो इट इज अ ग्रीन सिग्नल, आई एम स्टार्टिंग सर. इट इज अ ग्रीन सिग्नल, आई एम स्टार्टिंग सर. ओके, लेट्स गो. वेरी गुड सर. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. Let's see what exactly is
refrigeration. You know very well, it is the science of maintaining low temperature compared to surroundings. So it is the science means anything filled with logic. So it is the science of maintaining lower temperature with respect to or compared to surroundings. Very good, sir. You are maintaining lower temperature compared to surroundings. Wait. यहाँ पे the focus should be on the word maintaining. The focus should be on the word maintaining. So whenever you are maintaining, that means it is continuous. Whenever you are maintaining something, it means maintenance is a continuous process. It means it is continuous. So if you want to maintain lower temperature compared to surroundings, for example, मान लो this is the place where I want low temperature and these are our surroundings. These are our surroundings. ठीक है सर. This is the place where I wish to maintain low temperature. I want to maintain low temperature here and these are our surroundings. ठीक है sir. Very good. Now let the surroundings be at 30 degrees centigrade. ठीक है sir. And definitely this is also at 30 degrees centigrade. They are in thermal equilibrium. ठीक है sir. It's okay. Very good sir. Now how can I maintain this at low temperature? How can I maintain this at low temperature? But how can I bring this at low temperature? By removing heat. कैसे निकाल रहा है? I'll tell you who is removing that heat, what is the medium, what is the working fluid, we'll be seeing a little later. So इससे heat निकाल देंगे. So कैसा निकाल रहा है? How the heat is removed, that is my headache. Don't worry about that. Now the heat is removed. When the heat is removed, what will happen to its temperature? It comes down. So therefore, now slowly this temperature is coming down. Let us say I removed such an amount of heat so that it is brought to 5 degrees centigrade. ठीक है sir. So heat is removed. And you have studied thermodynamics, my dear students. All spontaneous processes occur in one particular direction. All natural processes they occur in. What do I mean by spontaneous or natural? जो process अपने आप होते हैं without any external help. किसी की जरूरी नहीं है. For example, इस टेबल पे मैं एक hot coffee रखा हूं सर. I kept hot coffee on the table. After some time, what will happen? Initially, if the temperature of the coffee is around 50 degrees centigrade, and after some time, it loses its heat and thereby it is brought to some room temperature. So naturally it is occurring. I am not removing heat. मैं उससे कोई heat नहीं निकाल रहा हूं sir. Very good sir. I am not removing any heat from that. So sorry, I am not externally doing something, कुछ work करके निकाल रहा हूं. Automatically it is occurring. Such processes are known as natural processes. Natural processes are also known as spontaneous processes which occur of their own. So when the heat is removed, I repeat, when the heat is removed, it is brought to lower temperature. Heat remove करके छोड़ दीजिए sir. You remove the heat and leave it sir. You remove the heat and leave it. What will happen? And you know, this is at high temperature, this is at low temperature. Due to temperature difference, again the heat will leak in. Again the heat will leak in. So if you are not doing anything, automatically after some time it will reach the temperature of this. So you are not maintaining the lower temperature. So refrigeration may you have to maintain lower temperature. So if you want to maintain, if you want to keep this continuously at lower temperature, so temperature difference के कारण जो भी heat continuously आ रहा है तो कंटिन्यूअसली उस हुड को निकालना पड़ेगा. वॉट एवर द हीट इज लीकिंग इन, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वॉट एवर इज एंटरिंग, दैट शुड बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली. एंड वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स, whenever you want something continuously, it is not possible with a process. For example, mitro, for example, there is a big cylinder and I have compressed air in this. Let us say the air is at 10 bar and atmospheric pressure, outside pressure is 1 bar. Now you tell me, it is such a big cylinder. Now you remove these stops. You remove these stops. This air starts expanding. Will it occur continuously? Now बताइए सर, क्या ये continuously होगा? बताइए सर, क्या ये continuously होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर. It will not
continuously. So once it expands, its pressure drops. So it keeps on decreasing, 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 decreasing. After some time, it reaches the pressure of atmospheric. So it stops. Once the equilibrium, mechanical equilibrium is reached, when both pressures become equal, it reaches equilibrium position and the process stops. So इसीलिए whenever it is process, it is only for a limited time. It's not continuous. It's not continuous. तो अगर आपको कोई भी चीज continuously चाहिए, it should run on a cycle. So याद रखना, that's why in refrigeration system you are maintaining lower temperature. That's why they should run on cycles. So इसीलिए we have refrigeration cycles. Is it okay, sirs? मित्रों, क्या ये is the point clear, sir? Yes. So therefore, our refrigeration systems, they run on cycles. There are different cycles. So we have ideal refrigeration cycle, because I'll be starting with this only, that is reversed Carnot cycle. Don't worry, don't worry. I'll be explaining everything, sir. Ideal refrigeration cycle or reversed Carnot cycle. Reverse Carnot cycle. Second, देन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसके बाद वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके बाद gas all cycles, sir, please note down, all these run on a refrigeration system and all these they run on a cycle. That's why we have different refrigeration cycles. So you may be wondering, sir, इतने cycles क्यों चाहिए? मेरे प्यारे दोस्तों, for all applications एक ही cycle possible नहीं है, sir. वन साइकिल में फिट फॉर वन पर्पस, एक साइकिल एक पर्पस के लिए होगा, दूसरा साइकिल दूसरे पर्पस के लिए होगा. सो लाइकवाइज वी हैव सिचुएशन लाइक दिस. ओके, 1 second प्लीज. मी दारू पेట్టుకో ఏసీ चालने गेला कारण नाही की. Okay, right, shall we start? Mitro, very good, sir. Yeah, very good, excellent. So therefore these are the different cycles. Wonderful. Wonderful. These are different cycles. Okay, no problem at all. So refrigeration system runs on cycle. Everyone knows this, right? Now, मेरे प्यारे दोस्तों, there is a working fluid. What does working fluid mean? Means that fluid which takes heat, जहां से भी low temperature produce करना है, wherever you want the lower temperature, from that lower temperature, from that heat should be taken. उसके बाद that heat should be given to somewhere. So there should be some working medium. There should be some fluid जो heat लेता है और दे देता है, transfer करता है. That working fluid is known as refrigerant. Refrigerant. अरे यार, so if you want to maintain low temperature, someone should take heat from that. Someone should take heat from that and remove that heat. So who is that someone? That someone we call it as working fluid, and that working fluid we call it as refrigerant. So what is a refrigerant? A substance which is used for developing low temperatures. मेरे प्यारे दोस्तों, we have got different substances. Examples, for example, we have air, we have water. Shocked guy? Shocked? How can water be refrigerant? Don't worry. When we see vapor absorption system, there I'll be showing water can be refrigerant. When we see gas refrigeration, I'll be showing air as the refrigerant. We have ammonia, we have carbon dioxide, we have R11, we have R12, we have R134. क्या कर रहे हैं सर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. Don't worry. I'll be giving you the meaning of R11. How this number has come. R stands for refrigerant. R stands for refrigerant. How these numbers have come, everything I'll be explaining when I teach properties of refrigerant. These are the examples of ये R134 क्या है? In fact, it is R134A. Why this A? All these I'll be explaining in a crystal clear manner. How these numbers have come. क्या आपको समझ में आया सर? So ये chapter होने तक, till we complete refrigeration, our working fluid will be refrigerant. ठीक है? So these are some of the examples of refrigerant. Very good, sir. Now let's understand. एक सेकंड देखो.
रेफ्रिजरेशन मींस वी हैव टू प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर। अब देखिए सर, अभी तो बताया मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा सर। लेट अस assume that this is the low temperature and this is the high temperature, and you know very well high temperature is what? अभी तो बताया, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस और द साइंस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग्स। तो ये लो टेम्परेचर है, ये हाई है। सो दीज आर आवर सराउंडिंग्स, these are our surroundings, and this is my system. Here I want to maintain low temperature. आप जानते हैं सर, surroundings are at high temperature, ध्यान से सुनिएगा, surroundings are at high temperature, my system is at low temperature. From high temperature to low temperature, heat leaks in naturally. So to maintain that low temperature, whatever heat is entering, that should be removed. मेरे प्यारे दोस्तों, why are you, who is removing this heat? Working fluid. Who is that working fluid? Refrigerant. So it can be any refrigerant that is taking heat from here, so that when the heat is taken out, its temperature is brought down. And why the dekho, why the heat is taken? Because this is at low temperature, surroundings are at high temperature, high to low, there is a heat leak. So heat जो अंदर आ रहा है, whatever is coming, I am removing to maintain low temperature. Excellent sir. And how is that low temperature maintained? देखो, लेकिन you have studied Clausius statement. Can you tell me, uh, can you tell me which is higher refrigerant? ये क्या बोलता है? आप बताइए सर, what is Clausius statement? In thermodynamics we have studied. Clausius statement का मतलब है, you know my dear students, we have to transfer heat from low temperature to, so आप बताइए, when water is flowing, ओवरहेड टैंक से नीचे ऑटोमेटिकली फ्लो होगा। व्हेन इट इज एट हायर एनर्जी, इट फ्लोस नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट नेचुरली। बट इफ यू वांट move water from ground floor to top floor, will it flow naturally? No, external pump is required, external work is required. So is the case with heat transfer. Heat naturally flows from higher to lower temperature, but lower से अगर आपको higher चाहिए तो एक्सटर्नल वर्क चाहिए, अगर लोअर से हायर चाहिए तो एक्सटर्नल इनपुट चाहिए। सो देयरफॉर वी आर रिमूविंग हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर। एंड प्लीज, व्हाई एम आई शोइंग विद अ सर्कल? ऑलरेडी यू नो दैट to maintain this lower temperature it should run on a cycle. This circle shows cycle, तो ये साइकिल पे रन हो रहा है। बट हम लो टेम्परेचर से हीट लेके हायर टेम्परेचर को हीट दे रहे हैं, लेकिन बट दैट इज पॉसिबल ओनली when there is external energy input. जब वो external energy input है तभी ये possible है सर। That energy input may be low grade energy, that energy input may be high grade energy, मतलब energy input may be work, may be heat. सर हीट कैसा होता है सर? एनर्जी, डोंट वरी, when we study vapor absorption refrigeration system, there we will be seeing that the energy input can also be heat. तो यहाँ पे मोस्टली 99% वर्क होता है सर। सो आई विल राइट दिस एज WN। क्या ये लाइन डायग्राम समझ में आया सर? दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। सो लो टेम्परेचर से मेरा वर्किंग फ्लूइड हीट ले रहा है एंड इट इज गिविंग टू हाई टेम्परेचर। क्या कभी देखे आप घर में जो रेफ्रिजरेटर है, अगर आप पीछे कंडेंसर कॉइल्स को हाथ पकड़ के देखेंगे, व्हेन यू जस्ट टच दोस कॉइल्स इट विल बी हॉट, मींस फ्रॉम द स्टोरेज इट इज टेकिंग एंड थ्रोइंग टू सराउंडिंग्स। मतलब वो जो गर्म लग रहा है आपको कंडेंसर कॉइल्स, मतलब वो हीट सराउंडिंग्स को दे रहा है। सो दिस इज हियर हायर टेम्परेचर का मतलब है सराउंडिंग टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर का मतलब हमारा रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। तो लेट मी टेक दिस टेम्परेचर एज T2 and let me take this temperature as T1. Absolutely fine sir. This is the heat rejected in condenser. Sir ये condenser क्या है? Don't worry, everything I'll explain in a systematic manner. Is it okay sir? आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते सर, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ हाउ टू क्रैक गेट इन 2 days, अगर ये थंबनेल बनाऊंगा हजारों लोग आएंगे, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन देयर इज नो सिस्टमैटिक वर्क, वो नहीं रहेगा आपके पास, फर्जी से दूर रहो आप। वेरी गुड सर। ओके राइट नाउ दिस इज माय रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मेरे मित्रों, दिस इज माय रेफ्रिजरेटर। तो लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है, हाई टेम्परेचर को दे रहा है, एंड देयर इज अ वर्क इनपुट। वेरी गुड। नाउ यू टेल मी, is it a work producing or work absorbing? This is actually a cycle. It is a work absorbing device. It is a work absorbing device.
That's why when you see on PV diagram and TS diagram, it will not be clockwise, it will be anti-clockwise on PV and TS diagram. Is it okay, sir? मैं अभी आपके comments नहीं देखूंगा, sir. First, let me cover theory. I will not waste your time. Then I will take some questions from you. Please understand this because your time is very important for me. Okay, sir. ये होगा. Now, whenever there is a work absorbing device, we don't use efficiency. Efficiency का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट. यहां पे आपको कोई वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है. यू आर नॉट गेटिंग एनी वर्क आउटपुट इन दिस डिवाइस. इनफैक्ट इट इज कंज्यूमिंग. सो दिस टर्म इज रेडिकुलस इन दिस. तो ये टर्म का कोई मीनिंग नहीं है. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं सर मेरे मित्रों, व्हाट आई डू इज आई विल यूज वन वर्ड नोन एज coefficient of performance. This is generally used with respect to work absorbing devices. Coefficient of performance, or this can be written as COP, coefficient of performance. इसका fundamental definition होता है, I'm not giving this definition with respect to any device. There are two different work absorbing devices. One is refrigerator, other is heat pump. मतलब I'm giving you a definition of COP which is valid for any device. तो पहले हम रेफ्रिजरेटर की बात नहीं करेंगे. सो द डेफिनेशन फॉर एनी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, सीओपी इज डिफाइंड एज desired effect by energy input. Please note down that I never used the word work input. मैं बोला एनर्जी इनपुट. ध्यान देना, ये सब इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एनर्जी इनपुट, दिस एनर्जी इनपुट मे बी हीट, मे बी वर्क और मे बी बोथ. ठीक है सर, वंडरफुल. दिस इज द जनरल डेफिनेशन. नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, EER. पहले इसको देखेंगे सर. बहुत बढ़िया सर. देखो मेरे मित्रों, नाउ इफ विथ रेस्पेक्ट टू रेफ्रिजरेटर, मित्रों विथ रेस्पेक्ट टू रेफ्रिजरेटर, लेट अस सी व्हाट इज द COP. अब आप बताओ व्हाट इज योर डिजायर. आपका डिजायर क्या है ये बताओ सर. व्हाट इज योर डिजायर, यू टेल मी. माय डिजायर इज to maintain in a refrigerator my desire is to maintain lower temperature. तो आप बताइए, how can I maintain lower temperature? I can maintain lower temperature only by removing this. If this heat is not removed, I cannot maintain lower temperature. So removing heat is the desire in this case. So how much heat is removed? Q2. So desired effect is Q2 by energy input. ये मेरा इनपुट एनर्जी है. दिस इज द इनपुट एनर्जी, दिस द इनपुट एनर्जी. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? मित्रों बोलिए बाबा. बोले रे बाबा, बाबा बोलो. इज इट ओके? मस्त चल रहा है सर. ठीक है, ये मेरा जनरल डेफिनेशन है. नाउ आई विल इंट्रोड्यूस सम न्यू टर्म्स. न्यू टर्म्स आर, मित्रों, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. एक नया शब्द यूज करेंगे सर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. एंड दैट इज RE. ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है देखेंगे सर. मैं पहले लिखूंगा द अमाउंट ऑफ हीट that is to be removed from the storage. Wait, I'll explain everything. पूरे नोट्स मिल जाएंगे सर, ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स विथ लवली डायग्राम्स. The amount of heat that is to be removed from the storage to maintain lower temperature. सुनो सर, to maintain lower temperature, whatever the heat is removed, that desired effect we call it as refrigeration effect. तो इसको हम ऐसे भी लिखते सर, COP of a refrigerator is whatever the heat is removed from the storage
To maintain this lower temperature, we call it as refrigeration effect. So therefore, Q2 is equal to RE by work input. This is the general equation of the COP of a refrigerator. This is the general equation. Is it clear, my dear मित्रों? क्या ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर. So मान लो every cycle and every process must follow all the thermodynamic laws because they are universally developed laws. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मित्रों देखो, let us take this refrigerator as my system. देखो, एनर्जी कंजर्वेशन तो होना ही है. ये अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है. टोटल एंटरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल लिविंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो WN is entering, this is entering, this is also entering. Total entering, entry should be equal to total living. So WIN is equal to Q1 minus Q2. Absolutely fine. So therefore, if I modify this equation, मित्रों, अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूं, तो COP of a refrigerator is equal to RE by work input. लेकिन Q2 very good, Q2 by work input. What is work input, sir? वर्क इनपुट क्या है सर? Q1 माइनस Q2. ये भी आप याद रख लेना सर. मित्रों समझ में आई? मेरे प्यारे बंधुओं समझ में आए? हे भगवान, ये बच्चों को हो क्या रहा है? मुझे अब मन भर गया सर आपसे. चलो लीव इट सर, यहां तक हो गया सर. ओके राइट. मेरे प्यारे दोस्तों, लुक एट, अभी तो देखें, COP of a refrigerator is equal to refrigeration effect by work input. ठीक है सर. Generally, this refrigeration effect is expressed in kilojoule per kg, and this work input is also expressed in किलोजूल पर केजी. ठीक है सर. तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ सीओपी सर? इसका कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज RE किलोजूल पर केजी, वर्क इनपुट किलोजूल पर केजी, सेम यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं है. इट इज अ प्योर नंबर. वन स्टूडेंट आस्क्ड मी क्वेश्चन, सर बात तो सब सही चल रहा है, मैथमेटिकली सीओपी तो बता दिए, फिजिकली क्या है थोड़ा बता दो ना. फिजिकली जब बताएंगे तभी तो मजा आएगा ना. बिल्कुल सही है सर. अभी थोड़ी एक 2-3 मिनट वेट करो. आई विल गिव यू द फिजिकल मीनिंग ऑफ सीओपी. इज इट ओके माय डियर लविंग स्टूडेंट्स? बिकॉज इंटरव्यू में आपको फिजिकल मीनिंग ही पूछा जाएगा. सीओपी इज आरई बाय वर्क इनपुट ऐसा नहीं पूछते हैं. ओके राइट. चल ठीक है. अर्थमैंदा गणेश बाबू? गणेशा, ओ गणेशा, और गणेशा. चलो कोई बात नहीं, लीव इट सर. नाउ फॉर एग्जांपल, लेट RE बी, आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, 100 kilojoule per kg. Let the work input be 25 kilojoule per kg. What does it mean? देखो, 1 kg of my working fluid is removing this much amount of heat. What is refrigeration effect? The amount of heat that is to be removed from the storage space. When I say 100 kilojoule per kg, मतलब 1 kg रेफ्रिजरेंट, 1 kg रेफ्रिजरेंट 100 किलोजूल का हीट लेके जा रहा है, निकाल रहा है. ओके. नाउ व्हाट इज वर्क इनपुट? मींस for 1 kg of refrigerant you have to supply 25 kilojoule of work. 25 kilojoule, that is the meaning here. But actually my fluid is flowing sir. It is a steady flow device sir. मेरा जो fluid है ना, actually अंदर system के अंदर flow हो रहा है. So there is a mass flow rate of refrigerant. Inside there is a refrigerant. It is flowing continuously. So let m dot be मास फ्लो रेट. किसका? आपका और मेरा मास फ्लो रेट नहीं, रेफ्रिजरेंट का जो अंदर घूम रहा है. इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ refrigerant. M dot is the mass flow rate of refrigerant. Am I right, sir? Is it okay? Yes. देखो, I'm using certain terms. Refrigeration capacity.
refrigeration capacity, it is nothing but m dot into re. सर समझ में नहीं आया. For example, you know what is re? So many kilojoule per kg. This re is representing how much heat is removed for 1 kg of refrigerant. Suppose I use m dot kg, 1 kg इतना हीट re हीट निकाल रहा है, तो m dot कितना निकालेगा? m dot into re. So m dot is generally expressed in kilogram per second. 1 kg is removing this much heat, so mkg will remove this much heat. So but why per second? Because it is flowing, it's not stagnant, it is not stationary, it is continuously flowing. So therefore you will get this in kilojoule per second, and this kilojoule per second is nothing but what? Kilowatt. So refrigeration capacity is expressed in kilowatt. मित्रों समझ में आया? Similarly, power input. Power input. Power input I'll designate with PIN, and that is given as m dot into work input. I repeat, m dot into work input. So 1 kg is consuming this much work. M dot will consume how much work? So already you know m dot is kilogram per second and work input is kilojoule per kg. कट गया तो किलोजूल पर सेकंड इज किलोवाट. सो व्हेन इट इज आरसी बोलते हैं इसको, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मल्टीप्लाई विथ मास फ्लो रेट. व्हेन इट इज पावर इनपुट मल्टीप्लाई विथ मास फ्लो रेट. अब देखो मित्रों, अरे बोलो समझ में आया? आया सर. सो सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू RE by work input. So what I do is I'll multiply and divide with m dot. Will there be any problem, sir? देखो, COP of a refrigerator is equal to RE by work input. So देखो, m dot I have multiplied and divided, तो ये cancel हो जाएगा, ये आएगा. What is m dot RE? It is RC. What is m dot into work input? It is power input. So therefore, this is the equation. Either you can use this or this. Kilowatt, kilowatt, kilojoule per kg, kilojoule per kg. All of you, have you understood? What is m dot, sir? Anyone in the class? It is the mass flow rate of refrigerant. यहां तक अगर क्लियर है तो आई प्रोसीड सर. मित्रों, it is clear. I'll proceed, my dear loving students. ठीक है सर जी? Okay sir. No problem at all. Wonderful sir, wonderful. यहां तक no one has a problem. Now let us see the physical meaning of what physically it represents. Let's see. Actually, COP. You may be wondering, sir, like whenever you use or define some terms, definitely there is a physical meaning for that term. Definitely उसका physical meaning रहता सर. और एक बात है सर, क्लास के बाद, once the class is over, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी. क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट भेज दीजिए कि हाउ वाज द क्लास, मतलब कैसा लगा. यू लीव ए कमेंट. अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करो, सी आप अच्छा नहीं पढ़ाए, ये भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज लीव अ कमेंट. चलो कोई दिक्कत नहीं सर. चलो ओके ना, पक्का? अभी नहीं रहे, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ क्लास, आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास. ओके सर? बोलो गोलू. ओके सर बोलो सब लोग. सब लोग एक बार ओके सर बोलो. बोलो एक बार, शुरू करेंगे. ओके सर, ओके सर. देयर इज नो पावर, यू नो, राइट फ्रॉम मॉर्निंग हियर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वंडरफुल. क्या मजा आ रहा है रे आपको पढ़ा के. हाँ देखो, फिजिकल मीनिंग ऑफ सीओपी. मैं एक सवाल पूछता हूं सर. क्या सीओप इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस. क्या सीओपी कभी वन से ही ज्यादा होना चाहिए? कैन सीओपी बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन? कैन इट बी लेस देन वन? कैन इट बी इक्वल टू वन? अभी तो पता नहीं सर. टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया. टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया. एक बार देखो सर. मित्रों, अब आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों. फॉर विंडो एयर कंडीशनर it's about 3. For domestic refrigerator, it's about 1. And for
vapor absorption system, and for gas refrigeration system, it is less than 1. Oh, oh. So COP of a refrigerator, I repeat refrigerator. I'm not saying heat pump. So COP of a refrigerator can be 1, can be less than 1, can be greater than 1. इसका physical meaning देखेंगे सर. Let's see the physical meaning of this. Physical meaning of this. ध्यान से सुनो. I'll give you the physical meaning of this. सुनो. मेरे पास एक ट्रक है सर. मेरे पास एक ट्रक है सर. ओके. दिस इज अ डीजल टैंक. बहुत केयरफुली देखो, बहुत केयरफुली देखो. दिस इज अ डीजल टैंक. ध्यान से सुनिएगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, I want to transport, I want to transport this diesel यहां से कुछ प्लेस ए को ट्रांसफर करना है. The same diesel, I want to transport it to some place B. The same diesel, I want to transport it to some place C. मतलब तीनों अलग अलग जगह पे मुझे इस डीजल को ट्रांसफर करना है सर. अब ये मत बोलो सर इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सर, इसका डिस्टेंस कम है, इसका बहुत ही कम है. ओके, दिस एनालॉजी. अब ये मत बोलो कि सर बीच में और दूसरा गाड़ी से ट्रांसफर कर सकते हैं ना, सो आप पागल है क्या, इतना क्यों. अब वो सब छोड़ दो. आई एम टेलिंग देयर इज नो अदर व्हीकल, ओनली दिस व्हीकल इज अवेलेबल. ठीक है सर. लुक एट, लेट अस अज्यूम दिस इज, ध्यान से सुनो, दिस इज 100 यूनिट्स, 100 लीटर. चलो 1000 लीटर लेंगे, 1000 लीटर. So if I want to transfer 1000 liter of diesel to some place, definitely a गाड़ी तो run होगा. This vehicle will run. So vehicle will consume some diesel. Let us assume that this vehicle to transfer 1000 liter of diesel from this place to this place, let us assume that it is consuming some 50 liter. So this is my input. This is my desire. My desire is to transfer 1000 liter of diesel from this tank to this place. What is COP? मतलब एक analogy बता रहा हूं सर. To transfer 1000 liter, desired effect. How much diesel is required? Input 50 liter. What is COP, sir? I think it is 20. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? Have you understood, sir? Have you understood? Yes. Now, I want to transport this 1000 liter of diesel to B place. So let it consume 1000 liter. मान लो यहां से यहां लाने के लिए 1000 liter of diesel, बहुत दूर है, ये दूर है, इसलिए this is consuming 1000 liter. What is the desire? What is the desire, sir? My desire is to transfer this much amount of diesel. So desired effect. And how much input it is consuming? So I have to burn 1000 liter of diesel to transport. So 1000. तो कितना हुआ सर? 1. ये तो बहुत ही दूर है. What is your desire? 1000. Now imagine that to transport 1000 unit of diesel, मुझे ये बहुत दूर है. It is consuming 2000 लीटर. इनपुट ये 2000 लीटर ले रहा है. अब आप बताओ सर, इट इज 0.5. आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आया सर? फिजिकल मीनिंग समझ में आया? इट क्लियरली शोज टू ट्रांसफर दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाट इनपुट इज रिक्वायर्ड. तो आप बताइए विच वन इज बेटर ऑप्शन, ए, बी और सी? आप बताइए विच वन इज बेटर ऑप्शन, ए, बी और सी? ए. Why, sir? For transferring same amount of diesel, it is consuming less input. When the denominator is less, this value is high. Higher COP indicates better performance. सर और थोड़ा डिटेल में बताओ. सो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया सर? टुडे हैव यू अंडरस्टूड COP can be greater than 1, can be less than 1, can be equal to 1. Have you understood, sir? So जितना ट्रांसफर कर रहे हैं, जितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता. टू ट्रांसफर दैट आई नीड सम इनपुट. इफ दैट इनपुट इज लेस देन द ट्रांसफर, इट इज बेस्ट. इफ द इनपुट इज इक्वल टू द ट्रांसफर, इट इज 1. इफ द इनपुट इज more than the transfer, it is worst.
सर आप लोगों को नहीं आया सर समझ में, आप लोगों को समझ में नहीं आया, यू पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड, माय डियर स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड, इज इट ओके? आया है ना सर? यस। तो आज से बताओ सर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर नॉट हीट पंप, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर का सीओपी वन से कम हो सकता, इट कैन बी वन, इट कैन बी ग्रेटर देन वन, अग्रीड? ऑल ऑफ यू अग्रीड? वेट सर, समवन आस्क्ड मी कि सीएफई ग्रेटर देन वन किसका होता है, वीसी साइकिल का ग्रेटर देन वन होता है, ये सब बताऊंगा ना सर। अभी तो बच्चा पैदा हुआ उसका, वो बोल रहा है आप सर उसकी शादी कब करेंगे, अभी तो पैदा हुआ रे, लेट हिम एंजॉय फॉर सम टाइम, अभी सब्जेक्ट आ रहा है, एवरीथिंग आई विल गिव यू, ओके? राइट, डोंट वरी। सो देयरफॉर टुडे वी अंडरस्टूड द फिजिकल मीनिंग ऑफ सीओपी, यस और नो मित्रों? देखिए सर मित्रों, अब देखो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, actually if you see physically what it is representing, देखो मेरे पास दो सिस्टम्स हैं। अरे यार मेरा लोड तो फिक्स है सर, व्हाट डू मीन बाय लोड इज फिक्स, ध्यान से सुनिएगा सर। फ्रॉम माय रेफ्रिजरेटर certain amount of heat is to be removed. Arey, I have a refrigerator, I'm keeping fixed vegetables and fixed water bottles, तो that load is fixed, means that much amount of heat should be removed, तो मेरा लोड फिक्स है सर, ये लोड फिक्स है सर। मेरे पास दो अलग अलग रेफ्रिजरेटर्स है, मतलब लेकिन लोड तो फिक्स है। व्हाट डू मीन बाय लोड इज फिक्स? this much amount of heat is to be removed to maintain lower temperature, उतना heat को निकालना है to maintain lower temperature, means load is fixed. What do you mean by load is fixed? My refrigeration effect or the refrigeration capacity वो fix है सर मेरा, clear sir? yes, yes। अब देखो, so मुझे बताइए, let us say COP of A is RE by work input of A, and what is COP of B sir? It is RE by work input of B. So why are you not rating REA REB? Because the load in both the cases से मेरा ही घर है, तो मैं दो रेफ्रिजरेटर्स चेक कर रहा हूं। एक दिन क्या कर रहा हूं, तो रेफ्रिजरेटर ए लेके चेक किया, एक दिन रेफ्रिजरेटर बी लेके चेक किया सर। दोनों में सेम सब्जी लगाया, वेजिटेबल सेम, वाटर बॉटल सेम। सेकंड मंडे आई यूज ए, same quantity of vegetables, same water bottles, b may be same water bottles, everything same। it is observed that the energy input, ये एनर्जी कहां से आ रहा है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो व्हेन यू आर रनिंग अ रेफ्रिजरेटर, I'll be explaining very clearly when I go to vapor compression cycle. There is a device known as compressor. So to run the compressor, you need motor. To run the motor, you need electrical energy input. तो ये input कहां से आ रहा है सर? Electric energy। Let us assume that this is taking, let us assume that this is taking more, मान लो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी ले रहा है, मान लो ये बहुत ही ज्यादा ले रहा है, तो what will be the COP sir? देखो for example, work input of A is some 20 and the work input of B is let us say some 10, तो आप बताइए सर COP of A, RE तो दोनों में सेम है, it is 20, then what is COP of B sir? तो it is RE by 10। बताओ सर किसका सीओपी बेटर है सर? दिस डिनोमिनेटर कम है का मतलब ये ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम है। So which one is best sir? It is consuming less electricity. As it is consuming less electricity, so as it is consuming less energy input, this performance is best. So therefore always remember COP represents running cost of the system. It represents running cost of the system. It represents running cost of the system. How running cost? Because जितना work input बता रहा है ये actually for a given load, work input ज्यादा का मतलब electrical energy more, electrical energy more means bill ज्यादा, that is known as running cost. So it actually COP shows the running cost of the system, always which COP is desired, higher COP। देखो जब COP ज्यादा है, सीओपी ज्यादा है मतलब वर्क इनपुट कम है, वर्क इनपुट कम मींस मेरे जेब से जो पैसा जा रहा है कम जा रहा है, वॉट एवर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम माई पॉकेट इज लेस, देयरफॉर लेस वर्क इनपुट मींस लेस एक्सपेंस, लेस मंथली बिल, इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड। सो सीओपी रिप्रेजेंट्स द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अगर इंटरव्यूज में पूछेंगे तो आपको क्या बताना है?
CRP are you by work input? ये मत बोलो सर. COP represents the running cost of the system. Higher the COP, lower is the running cost because electricity bill कम आएगा. COP ज्यादा है का मतलब work input कम है. Work input less means energy consumption is less. Energy consumption less means electricity bill is less. तो यहाँ पे एक sentence लिखूंगा. इंटरव्यूज में पूछेंगे. COP represents running cost. COP represents running cost of the system. Higher the COP, lower is the running cost and better is the performance. All of you, have you understood, sir? क्या बोलता है रे? Is there any method to achieve? क्या बोला है? नहीं दिख रहा. Sir, is there any method to achieve lower CP? पता नहीं है रे. पूछ सवाल जब पूछते हैं ना, कुछ अच्छा खासा सवाल पूछा. Is there any method to achieve lower CP? आपको low COP चाहिए, higher COP चाहिए. Sir, is there any method to fail the examination? पढ़. अरे यार ये भी कोई सवाल होता है सर. मैं बोला हायर सीओपी इज गुड फॉर द सिस्टम. हायर सीओपी का मतलब हायर द सीओपी मींस बेटर परफॉर्मेंस, लो रनिंग कॉस्ट. सर इज देयर एनी मेथड टू अचीव लोअर सीओपी? सर इज देयर एनी मेथड टू फेल द एग्जामिनेशन? मत पढ़. अरे सवाल अच्छा पूछो. हाँ ये बोलो. यस यस यस. अभी तो शुरुआत है ना बेटा. अभी तो शुरुआत है ना. आपको हायर सीओपी अचीव करने के पूरे टेक्निक्स बताऊंगा. आग 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 लगा देंगे. ओके, डोंट वरी. जितना सीओपी चाहिए मैं दिलवा दूंगा आपको, लेकिन आप रेगुलरली आना चाहिए. अरे बुरा मत मानना बेटा, मैं अगर डाटा तो आपको प्लीज, बिकॉज सवाल ही ऐसा था. समझ गए ना? माफ करना बेटा. ओके सर, ओके सर. मजा आ रहा है सर. मजा आ रहा है सर. वाह क्या बच्चे हैं रे. बच्चे हो तो ऐसा. बच्चे मन के सच्चे. ब्रिजेश ऐसा मत बोलो बेटा, प्लीज. ऐसा मत बोलो बेटा, इट इज रॉन्ग. किसी पे कमेंट मत करना आप. चलो यहां तक समझ में आया. तो डू यू वांट हायर सीओपी और लोअर सीओपी? डू यू वांट हायर सीओपी और लोअर सीओपी? डू यू वांट हायर सीओपी और लोअर सीओपी? डू यू वांट हायर हायर सीओपी? बहुत बढ़िया. व्हाट डज हायर सीओपी मीन? COP represents the running cost of the system. Higher the COP, lower is the running cost. Monthly bill कम आएगा. Best performance. Okay, sir. Good. Don't worry, sir. There are some systems with lower COP. Still, we are running those systems because certain situations में आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है सर. तो आपको अगर ऑप्शन नहीं है तो उसी को यूज करना पड़ता है. That's why there are some refrigeration system like gas refrigeration system, vapor absorption system. Despite their lower COP, still we use those systems. मैं रीजन बताता हूं. Don't worry. ठीक है सर. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? चलो. Now यूनिट ऑफ. मैं पहले थ्योरी कंप्लीट करूंगा सर, उसके बाद क्वेश्चंस, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ले लेंगे सर. फर्स्ट आई विल कंप्लीट थ्योरी, देन ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. टीआर मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. बिलीव मी सर, बहुत इंटरव्यूज में पूछा है, बहुत हर एक एग्जाम में आता है सर. बिलीव मी, दिस विल कम इन एवरी एग्जाम, दिस विल बी आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू. हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में यही आता है सर. सुनो क्या है. देखो मेरा मकसद, माई एम इज नॉट टू गिव एग्जाम एग्जाम एग्जाम. सी फर्स्ट यू लर्न द सब्जेक्ट. वंस यू लर्न द सब्जेक्ट एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली. पहले आप सब्जेक्ट को सीख लो. एक बार सब्जेक्ट सीख लिए तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगे सर. पहले फर्स्ट एम इज टू लर्न द सब्जेक्ट. मित्रों
The first aim is to learn the subject. Chalo. What is this ton of refrigeration? First, let me write, sir. First, let me write, sir. Chalo. देखो, what is the definition of ton of refrigeration? Generally, ton का मतलब आपको क्या याद आता है, सर? Generally, when I say ton, क्या याद आता है, सर? हाँ, बोलो. 1000 kg, वेरी गुड. मास याद आता है, बहुत बढ़िया सर. व्हेन आई से टन, यू आर राइट सर, मास याद आता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से 1000 kg, 1000 kg, 1000. बहुत बढ़िया सर. देर आर सम देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिडन इन दिस. चलो मैं आपको बताता हूं सर, सुनिए. फर्स्ट लेट मी राइट द डेफिनेशन. देखो, कुछ टेक्स्ट बुक्स क्या करते हैं मैं बताता हूं. फर्स्ट विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज द unit of refrigeration or ton of refrigeration. 1 ton of refrigeration is 1 ton of refrigeration is the amount of heat that is to be removed from 1 ton of water at 0 degree centigrade to convert it into ice at 0 degree centigrade in 24 hours or 1 day. I request everyone to read the statement. I request everyone to read the statement. एक बार statement पढ़ लीजिए सर. I request everyone. 1 ton of refrigeration is the, ध्यान से सुनो, एक बार TON नहीं लिखा, एक बार TON लिखा. मुझे स्पेलिंग नहीं आता, चलो मान लेंगे, वो भी सही है. इस बंदे को कुछ आता ही नहीं, चलो मान लो. लेकिन आपको तो पूछना है सर, एक बार TON नहीं लिखे, एक बार TON लिखे, ऐसा क्यों लिखे? चलो कोई बात नहीं, इसको पागल को नहीं आता है, छोड़ दो. बताता हूं सर, डोंट वरी. 1 ton of refrigeration, which is TR, is the amount of heat that is to be removed from 1 ton of water at water is at 0 degree centigrade to convert it into ice at 0 degree centigrade in 1 day, that is 24 hours. क्या मतलब है सर? 1 टन पानी से, पानी कितने टेम्परेचर पे है सर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर, remove the heat. When you are removing heat, your water is converted into ice. ठीक है सर. All these I am carrying out at atmospheric pressure, because at atmospheric pressure water gets converted to ice at कितना 0 degree centigrade. ठीक है सर. So I am not changing the pressure sir, I am removing heat from water which is at 0 degree centigrade. तो जब हम पानी से हीट निकाल देंगे तो वो आइस में कन्वर्ट होगा सर. लेकिन याद रखना, what type of heat is removed here? बताइए सर, what type of heat is removed sir? Water is at 0 degree centigrade, ice is at 0 degree centigrade. Is there any change in temperature? Whenever there is a change of temperature, you call it as sensible heat. But here there is no change of temperature, there is only change of phase. Liquid phase is converted into solid phase. So what type of heat is removed? Latent heat. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. Whenever the heat transfer is associated with phase change, that heat transfer you call it as latent heat. Latent का मतलब hidden. हिडन का मतलब क्या है सर? आपको तो टेम्परेचर डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन कुछ अंदर से हो रहा है. चलो लीव इट सर. ये सारा प्रोसेस कितने टाइम में कर रहा है सर? आप एक दिन में. मैं बताता हूं सर, इसका फिजिकल मीनिंग बताता हूं. इधर देखो, मेरे पास 1 टन पानी है, वाटर एट व्हाट टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसको मैं आइस में कन्वर्ट कर रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हाउ कैन आई कन्वर्ट सर? हाउ कैन आई कन्वर्ट वाटर टू आइस? मैं वाटर को आइस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं सर?
पानी को अगर आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको तो हीट निकालना है सर, हीट निकाल दिए। तो ये सब कितने दिन, मतलब देखो ध्यान से सुनो, यू आर रिमूविंग हीट। when the heat is removed, this water is converted into ice, लेकिन ये प्रोसेस एग्जैक्टली 24 आवर्स तक कर रहा है। तो इस 24 आवर्स में आप ऐसा हीट को निकालो सो दैट जस्ट एग्जैक्टली इन 24 आवर्स this water at zero is converted into ice at zero, and that amount of heat you call it as 1 ton of refrigeration. So please note down that the unit of refrigeration, when I say 1 ton of refrigeration, it is not the unit of mass. वो मास का यूनिट नहीं है, वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर देखो सर, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, देखो, हीट रेट, heat per time, that much heat is to be removed in this much time, so it is showing you the heat transfer rate. It's not showing the mass. समझ में आया सर? ये पहले याद रख लेना सर। तो ये मतलब क्या है सर? What is the physical meaning of this? तो 1 टन पानी which is at 0 degree centigrade, 1 ton water which is at 0 degree centigrade, you take out heat, ऐसा एडजस्ट करो इसको, एग्जैक्टली 24 आवर्स में पूरा 1 टन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू 1 टन आइस। आई रिपीट सर, यू एडजस्ट, यू फाइंड आउट सच ए वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कीजिए, यू फाइंड वन सच हीट ट्रांसफर वैल्यू, सो दैट एग्जैक्टली इन 24 आवर्स 1 ton of water at 0 degree centigrade is converted into ice at 0 degree centigrade, and that heat transfer per unit time, you call it as 1 ton of refrigeration. So in interviews, if they ask you what is ton of refrigeration representing, it is actually representing heat transfer rate, not the mass. Is it okay, sir? Okay, sir. Say yes or no. Right. अब देखो सर, एक सेकेंड, व्हाट इज द लेटेंट हीट? मतलब जब आप पानी को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 kg पानी को, फॉर 1 kg वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस, हाउ मच हीट इज टू बी रिमूव्ड? 334 किलो जूल पर केजी, दिस मच। मतलब 1 kg के लिए इतना हीट निकालना है। अब मुझे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैलकुलेट करना है सर, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। कितना पानी लिए सर? कितना पानी लिए सर आप? 1 टन। एज यू सेड इट इज 1000 kg। चलो ठीक है, ओके, 1000 kg लिए, 1 kg के लिए दिस मच हीट इज टू बी रिमूव्ड, 1000 kg के लिए सो मेनी किलो जूल पर केजी। बहुत बढ़िया सर, सो मेनी किलो जूल पर केजी। लेकिन ये पूरा कितने दिन में हो रहा है? 24 आवर्स। आवर का मतलब 3600 सेकेंड। सो देयरफॉर amount of heat to be removed from 1 ton of water at 0 degree centigrade to convert into ice in 24 hours, एक बार इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए सर। 1000 into 334 divided by 24 divided by 3600, 24 hours। आवर का मतलब 24 hour, 1 day means 24 hour means 3600 second, so this is 3.86 kilojoule per second kilowatt। वेरी गुड। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या ये सही है सर? क्या ये सही है सर? देखो मेरे मित्र, आपके कुछ टेक्स्ट बुक्स क्या बताते हैं पता है सर? 3.86 is approximately they write it as 3.5। कैसा लिख सकते जी? फिर इसको 4 क्यों नहीं लिख सकते सी? दिस इज रॉन्ग सर। अरे कॉन्सेप्ट में तो गड़बड़ नहीं किए हम, कॉन्सेप्ट में तो गड़बड़ नहीं किए। 1 टन का मतलब 1 टन नहीं लिए, मतलब कुछ ना कुछ होगा। अब ध्यान से सुनो सर, अब बहुत ध्यान से सुनना है सर आपको। देखो 1 टन, अगर आप ब्रिटिश सिस्टम लेते हैं, इट इज 2200 पाउंड्स। अगर आप अमेरिकन सिस्टम लेते हैं, इट इज एक्चुअली 2000 पाउंड्स। अगर आप मेट्रिक सिस्टम लेते हैं, इट इज 1000 kg। लेकिन when we defined when we defined this ton of refrigeration, जब ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ध्यान से सुनो,
जब ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन डिफाइन किया गया, इट इज एक्चुअली 1 ton of refrigeration is the amount of heat that is to be removed from one, देखो, from 1 American ton, फ्रॉम 1 American ton। इसका मतलब है सर, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है, 1 सेकंड प्लीज। हेलो, हेलो, देखिए सर जी, एक सेकंड प्लीज। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? विथ योर परमिशन कैन आई मूव? यस। अब देखो, एक्चुअली इट इज, मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअली इट इज नॉट, देखो, ब्रिटिश टन का मतलब 2200 एलबी, इसका मतलब 1000 kg सर। ब्रिटिश टन मींस 1000 kg, ब्रिटिश टन मींस 1000। देखो, ब्रिटिश का टन का मतलब 2200 एलबीस है, तो इट इज 1000 kg। बट इन वाइल डिफाइनिंग 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन वी यूज अमेरिकन सिस्टम। तो क्या होगा सर, अमेरिकन सिस्टम में 2000 पाउंड ले रहे हैं सर, तो कितने केजी होगा सर? सो इट विल बी 2000 into 1000 divided by 2200. I think you are getting this as 908 kg. Am I right, sir? Is it 908? Is it 908? 2000 into 1000 divided by 2200. Yes, I think 908 कुछ आ रहा है ना? Is it correct, sir? बोलो सर जी, is it correct? मित्रों, 908, okay, 909, 908 और 909 कुछ आ रहा है सर। चलो, तो एक्चुअली हमें क्या लेना है सर? देखो, अब you have to take the mass not as 1000, you have to take not as 1000, you have to take 909, so many kg, and 334 kilojoule. So 1 kg, for 1 kg this much heat is removed, for 909 kg this much, in how much time sir? 24 hour का मतलब 3600 सेकंड। सो kg kg गया, किलोजूल पर सेकंड इज किलोवाट। अब कितना आ रहा है सर ये? 909 into 334 divided by 24 divided by 3600. Yes, my dear, it is 3.5 kilojoule per second. Wonderful, sir. समझ में आया सर आपको? Now have you understood, sir? अब इसका फिजिकल मीनिंग बताऊंगा सर। टटाली टटाली सबको समझ में आया सर? वाह, this is actually 1 ton of refrigeration. Okay, sir? हायना में उत्तर, हायना में उत्तर, हायना में उत्तर, डी 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 डी। No one is happy in the class. No one is happy in the class. ये क्या हो रहा है रे? क्या बच्चे हैं रे? वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। ओके, तो आज से 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, इसका मतलब किलोवाट। और देखो, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 60, यू नो वेरी वेल, तो 1 सेकंड के लिए इतना है, तो 1 मिनट के लिए कितना होगा सर?
it will be 3.5. If I multiply with 60, I'll get per minute. Because 1 second is 1 by 60th of minute. So this will be 210 kilojoule per minute. So physically, what is this showing, sir? Physically, what is this showing, sir? Excellent, sir. Someone said, when I write TONNE, actually it is representing the heat transfer rate. When I write TON, it is actually representing mass, मतलब kg में represent कर रहा है. That is the only difference. Otherwise, ज्यादा फर्क तो नहीं है सर. समझ में आ गया सर? बहुत बढ़िया सर. ठीक है सर. वंडरफुल. तो अब फिजिकली इसको समझेंगे सर. फिजिकली व्हाट इज दिस? 1 TR is equal to 3.5 किलोजूल पर सेकंड. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग है, इफ यू हैव अ 1 ton रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इट मींस इन 1 second 3.5 किलोजूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड. 1 सेकंड में 3.5 किलोजूल का हीट ट्रांसफर हो रहा है. अगर 2 टन है सर, अगर 2 टन है तो 1 टन के लिए 3.5, 2 के लिए मल्टीप्लाई विद 2, it is 7 kilojoule per second. When you have a 2 ton refrigeration system, it means in 1 second it is transferring 7 kilojoule. Is it clear, my dear students? Anji, bolo. Shall I proceed with your permission? Shall I proceed with your permission? Because your permission is very, very important. Your permission is very, very important. So concepts khul rahe sir. So which ton are you using in 1 ton of refrigeration? American ton. Okay. चलो एक काम करते हैं सर. We'll take a break of 2 minutes. Just we'll take a break of 3 minutes. Just 3 minutes. यहाँ पे 12:11 हो रहा है. 12:14 को मैं आ जाऊंगा. ओके सर. ओके सर. ओके सर. ओके राइट.
मित्रों, हेलो। चलो, आ गए। वाह, क्या टाइम पे आ गए, देखो। मजा मजा, मजा मजा। चलो स्टार्ट। चलो, सब ठीक चल रहा है सर? इज एवरीथिंग गोइंग ऑन वेल मित्रों? इज एवरीथिंग गोइंग ऑन वेल मित्रों? नहीं आ रहा साउंड। हेलो। बच्चों का आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रहा है। चलो, आवाज नहीं आ रहा, अब आ रहा है। मित्रों 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 मित्रों, चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। थैंक यू आदित्य। थैंक यू डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर आदित्य बोला मैं आपको। अभी पावर नहीं है। हेलो। हाँ, तो क्लास के बाद यू हैव टू लीव कमेंट। आपको कमेंट छोड़ना ही है सर, ओके? नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, ओके सर? चलो, लीव इट नाउ। तो बेसिक्स आर क्लियर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखो, क्या बेसिक्स पढ़े। 1 ton of refrigeration is 3.5 kilowatt, or it is 210 kilojoule per minute, and COP is equal to RE by work input. COP is equal to RC by power input. ये हो गया। और क्या देखें सर? द लाइन डायग्राम ऑल्सो वी हैव सीन। दिस इज द हायर टेम्परेचर, सॉरी इसको T1 लिखेंगे। दिस इज द लोअर टेम्परेचर, दैट इज T2 लिखेंगे। दिस इज द वर्क इनपुट, एंड दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है सर, यहां तक देख लिए। सो शैल आई प्रोसीड विथ योर परमिशन? चलो सर। So we are starting refrigeration cycle. Let us start with the first cycle. Ideal refrigeration cycle, which is also known as reversed. Why the refrigeration systems are running on cycle? You know very well. देखो सर, अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आप मुझे इनकरेज करेंगे और इंथुजियाज्म से और पूरे कॉन्सेप्ट देके आपको एक्सी में जितने क्वेश्चंस इस एरिया से आ रहे हैं पूरे क्लियर करवाऊंगा। मैकेनिकल में कितने आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। इंजीनियरिंग सर्विस में जा रहा है कवर करूंगा, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं जाऊंगा कब्रस्तान। ठीक है सर। मतलब थोड़ा ब्रेक दिया, बस खत्म हो गया। यूट्यूब पे ये क्राउड आई, पता नहीं सर। जुड़े रहो, बने रहो। Ideal refrigeration cycle, it is also known as reversed कार्नोट साइकिल। ठीक है सर, एक काम करते हैं सर, एक बार जस्ट कार्नोट साइकिल देखेंगे, नॉट जस्ट एक बार ओरिजिनल कार्नोट साइकिल देखेंगे। लेट्स सी ओरिजिनल कार्नोट साइकिल। ओरिजिनल, नॉट रिवर्स्ड। देखो, देयर इज अ डिफरेंस। आई नो कार्नोट साइकिल हो या रिवर्स कार्नोट साइकिल हो, इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल, बिकॉज एवरी प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम थर्मो में पढ़े थे, उसके कोई टेंशन नहीं है सर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं सर, फर्स्ट कार्नोट साइकिल देखेंगे। इट इज अ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। ओके, रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स्ड इज पावर एब्सॉर्बिंग साइकिल। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम कार्नोट साइकिल देखते हैं, दिस इज कार्नोट साइकिल। This is a Carnot cycle. So Carnot cycle consists of
क्या बोले? फर्स्ट टाइम क्लास विंटूना सर చాలా మజా అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ బేటా, థ్యాంక్ యూ గణేష్, థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. हाँ, you just tell me on TS diagram, this is temperature entropy. Is it a clockwise cycle? देखो, दुइया, 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 दुइया. So it is a clockwise cycle. So it is a power producing cycle. So Carnot cycle consists of two types of processes. I am not saying how many process, nature of processes, nature की बता रहा हूं, दो types of processes है. ये दो isothermal because horizontal, this is horizontal, so temperature is constant. These two are isothermal and these two are reversible adiabatic, that is isotropic. So there are two types of processor types bola, but how many total processes are there? Four. 1 to 2 is expansion, 2 to 3 is heat rejection or condensation, 3 to 4 is compression, and 4 to 1 is heat addition. This is a Carnot cycle. But हमने बोला reversed Carnot cycle. So just you reverse its directions. इसको उल्टा बना दो. That will become refrigeration cycle. That will become anti-clockwise cycle. That will become work absorbing cycle. That's why I use the word reverse Carnot cycle. So in examination, he may be asking question, which one of the following is an ideal refrigeration cycle? Option A will be given as Carnot cycle. Option B will be given as vapor compression cycle. Option C will be given as this gas refrigeration cycle, and D he'll give as reverse Carnot cycle. So please note down that ideal refrigeration cycle is not Carnot cycle. It is not Carnot cycle. It is reverse Carnot cycle. Okay, sir? Is it okay, sir? Yes. Now let us take Carnot cycle, sir, reversed. And you all, I'll be teaching again in power plant also. Carnot cycle is not practically possible because यहाँ पे जो लिक्विड है, देखो यहाँ पे विल बी स्टडिंग दिस रीजन, ये डोम के अंदर दिस रीजन इज शोइंग व्हाट रीजन सर? एनीवन, व्हाट इज दिस रीजन शोइंग सर? लिक्विड वेपर. इट इज लिक्विड, इट इज वेपर. एंड यू नो दिस लिक्विड विल डैमेज द टर्बाइन ब्लेड्स. अगर पावर प्लांट की बात करें, पावर प्लांट, दिस विल डैमेज टर्बाइन ब्लेड्स. एंड सडन स्टॉपिंग ऑफ द कंडेंसेशन हियर इज डिफिकल्ट. एंड पंपिंग ऑफ, अगर आप पंप कर रहे हैं तो यहाँ पे लिक्विड भी है, यहाँ पे वेपर भी है. पंपिंग ऑफ लिक्विड वेपर टू फेज में डिफिकल्ट होता है. दैट्स व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकल साइकिल, which I taught very clearly. मैं आपको थर्मो में भी पढ़ाया था. So it is not practical, only it is a reference cycle, sir. It is only a reference cycle. Is it okay? It is only a reference cycle for comparing others. Comparing others. Chalo. Anyway, we'll be studying this. This is my, should it be clockwise? Nah, it should be anti-clockwise. देखो sir. This is known as duya. This is known as reverse Carnot cycle, or this is ideal refrigeration cycle. सर इसको थोड़ा फील करवाओ सर. बहुत बढ़िया सर, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, सुनो केयरफुली. लेट दिस बी 1, let this be 2, let this be 3, and let this be 4. ठीक है सर. देखो एक बार, here I have a storage. Here I have storage. So देखो, यहां से heat is taken out. तो क्या हो रहा है सर? जब हीट ले रहा है, वो क्या कर रहा है सर? उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है सर. इट्स एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. ठीक है सर, हीट ले रहा है. तो यू मे बी वंडरिंग, सर जब हीट लेता है तो टेम्परेचर शुड इंक्रीज ना? इज इट नेसेसरी सर? when heat is absorbed, is it necessary to always increase the temperature? Latent heat तो हो सकता है ना सर. So you know very well, when you are supplying heat to water, let us say water is at 100 degrees centigrade at atmospheric pressure. So you add heat to water, what will happen sir? So the temperature doesn't change. So when the pressure is constant, atmospheric pressure, at 100 degrees centigrade, it starts boiling. So means when you are supplying heat, two things can occur. One is there may be rise in temperature, or when you are supplying heat, there may be rise in temperature, or there may be change in phase. यहाँ पे phase change हो रहा है सर, इसलिए temperature change नहीं हो रहा. जब phase change हो रहा है, तो my liquid is converted into vapor. Vapor gases have more disorderness. That's why its entropy is increasing. तो स्टोरेज से हीट ले रहा है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होंगे. कैसा पॉसिबल है सर? आपको कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा सर, कुछ इनपुट देना पड़ेगा. और ये जो हायर हीट है मित्रों, और ये जो है ना, सो प्लीज ऑब्जर्व, मेरा रेफ्रिजरेंट, अब यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है सर. दिस आई राइट इट एज Q1. तो लो टेम्परेचर पे हीट इज टेकन,
from the low temperature heat is taken and it is rejected to higher temperature. This is the reverse Carnot cycle. Let the lower temperature be, इसको मैं TL लिखूंगा. Let the higher temperature be, इसको मैं TH लिखूंगा. This is the higher temperature, this is the lower temperature. ठीक है सर, देखो एक बार. अब बताइए सर, व्हाट इज द सीओपी? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसको बोलते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल, और इट इज द मैक्सिमम सीओपी सर, और इट इज आइडियल सीओपी सर, इट इज आइडियल सीओपी. दिखा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीओपी? इट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट. ठीक है सर, ऑलरेडी यू हैव सीन. इसका मैं इक्वेशन भी डिराइव कर चुका हूं सर अभी. सो आइडियल सीओपी इज this, I wrote it as Q2 by work input can be written as Q1 minus Q2. Is it clear, sir? Yes or no? Already मैं दिया sir. This equation was given because work can be. अरे यार क्या है सर, ये तो आप ना disappoint कर रहे हैं सर. You people are disappointing me. You people are disappointing me, sir. कहाँ गया रे वो? देखो, Q2 by Q1 minus Q2. Q2 by work input is this minus this. Already have given Q2 by Q1 minus Q2. Yes, sir. It is already given. It is already given. So you should remember, sir. You should not waste time. ठीक है सर. कहाँ गया रे वो? हाँ जी सर. Q2 by Q. अब देखो सर. This is Q2. How to calculate Q2? In thermodynamics, we have studied. If you want to calculate the heat transfer on TS diagram, calculate the area under the line or curve. That will give me reversible heat transfer. देखो एक बार, अगर मुझे Q2 चाहिए, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, let this entropy difference, इसको मैं लिखेगा, इसको लिखेगा डेल्टा एस. आप बताइए व्हाट इज Q2? मतलब यहां से लेकर यहां तक हीट ले रहा है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करो. क्या आप बताएंगे सर? Q2 विल बी इक्वल टू, मित्रों, Q2 will be equal to, what is this height, sir? This is TL. This is TL into length into width. This width is delta S. This is the heat taken from the storage. Very good, sir. Now, what is Q1, sir? Q1 के लिए क्या है सर? इसके नीचे का एरिया. डेल्टा S तो सेम है. So what will be Q1, sir? What will be Q1? It is TH. So Q1 can be written as, if you want Q1, this is Q1, it will be T, this length into this height is TL, high, this is higher temperature into delta S. तो दिस पूरा एरिया मिल जाएगा सर. नहीं आ रहा है सर आपको समझ में? सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर ऑन टीएस डायग्राम, कैलकुलेट द एरिया. 2 3 के नीचे का एरिया, दिस लेंथ इज TH एंड द विड्थ इज डेल्टा S. सो दिस इज TH into डेल्टा S. ठीक है सर, पुट करो यहां पे. सो आइडियल COP इज इक्वल टू Q2. What is Q2? T lower into delta S by Q1. Q1 is T higher delta S minus T lower delta S. Very good, sir. मेरे प्यारे दोस्तों, is it clear? I have just substituted these values, sir. देखो एक बार. T Q2 is TL delta S. Q1 is TH delta S. तो delta S, delta S, delta S गया. तो COP, ideal COP और the maximum COP is equal to T lower by T higher minus T lower. Is it clear, my dear student? And temperature should be strictly in Kelvin. Is it clear? Hope you understood, sirs. If this is clear, I'll proceed. Bolo, sirs. This is the maximum or ideal COP. Sometimes he uses the word relative COP. Relative COP का मतलब होता है actual COP by maximum COP, or this is ideal COP or reverse Carnot का COP. Is it okay, sirs? Mitro, say something, dear. Say something. Is this okay? If you say okay, then we'll proceed, sir. Now, I will give. ये actually ना ध्यान से सुनो सर. This is my COP देगा. मुझे बताइए सर, यहाँ पे एक great statement दे देंगे सर. The ideal COP or the maximum COP किस पे डिपेंड हो रहा है बताइए सर? Because it is a reversible. Carnot is always reversible. Of course, it is a reverse Carnot. मतलब it is a reversible cycle.
तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है सर? द सीओपी इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। तो यहां पे मैं गोल्डन सेंटेंस लिखता हूं सर, आई सीओपी ऑफ Carnot refrigeration cycle. When I use Carnot refrigeration, it is reverse Carnot cycle. Carnot refrigeration cycle. It is reverse Carnot cycle. Depends on temperature limits only, and it does not depend on working fluid. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सर, इसको बॉक्स में रख लेना सर। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको बॉक्स में रख लेना सर। सबको समझ में आया सर? एंड डोंट वरी सर, आई विल बी गिविंग यू वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दूंगा सर आपको। यहां तक क्लैरिटी आ गया सर सबको? अगर क्लैरिटी आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए सर जी। यस, अब हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास मैं थर्ड नवंबर से कंटिन्यूस ले लूंगा सर, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल फॉर 2-3 days। तो नेक्स्ट क्लास 3 नवंबर से, मे बी हो सके तो सेकंड, इफ आई रीच अर्ली तो सेकंड इवनिंग में रख सकता हूं, लेकिन 3 नवंबर से आई बी टेकिंग रेगुलरली, नीटली कंप्लीट करूंगा सर। ओके चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम थर्ड, ये मत बोलना सर आज स्टार्ट किए 2 दिन गैप दिए, नहीं, आज अच्छा दिन है इसलिए स्टार्ट किए, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, सब अच्छे दिन है। नाउ introduction to vapor compression refrigeration cycle, or simply we call it as VCR, vapor compression refrigeration cycle. Is it okay, sir? मैं दे दूंगा ना नोट्स आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अभी, आफ्टर द क्लास आई विल इन्फॉर्म देम, ठीक है? नोट्स मिल जाएगा सर। रिलेटिव सीओपी, रिलेटिव सीओपी तो बताया ना रे, रिलेटिव सीओपी इज एक्चुअल सीओपी बाई कार्नोट सीओपी और मैक्सिमम सीओपी। मान लो, कभी भी याद रखना सर, इट इज समथिंग लाइक द सेकंड लॉ एफिशिएंसी। रिलेटिव सीओपी समझ में आया सर? ओके राइट, ठीक है चलो, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, वो भी बढ़िया सा नोट्स, अच्छे नोट्स। चलो, इंट्रोडक्शन टू वेपर कंप्रेशन मैं बता रहा हूं सर। दिस टॉपिक इज हार्ट ऑफ वीसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम सर। ये इतना बेस्ट साइकिल है। someone asked me a question, sir, how can I get more COP? This is one such cycle where the COP is best COP। आपको घर में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, घर में जो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर जो रन हो रहा है, दे आर ऑल रनिंग ऑन वीसी साइकिल ओनली। ये सारे वीसी साइकिल पे ही रन हो रहे हैं सर। सो विल सी हाउ दिस इज रनिंग। देखो, लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से देखो सर। पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद एक एक एक्सप्लेन करूंगा सर। VC cycle consists of 4 processes. फर्स्ट आई राइट, उसके बाद एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा सर। फर्स्ट लेट मी राइट, देन एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा सर। विल इट बी ओके सर? ठीक है, राइट। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। when the starting point and final points are same, then it is a cycle। जब बिगिनिंग और अंत एक ही पॉइंट है तो साइकिल। 1 to 2 is reversible। I'll explain everything, sir. Don't worry. Let me write first. Reversible adiabatic compression. We have seen in thermo, reversible adiabatic means isentropic। हम थर्मो में पढ़े हैं सर। ठीक है सर।
एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. ओके सर, ओके सर. जस्ट गिव मी 1 मिनट. राइट. देखो, देखो सर, 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर. डोंट वरी, अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, इससे टेंशन ही मत लें. फिजिकली आई एक्सप्लेन. कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. 3 to 4. Why isenthalpic is what is throttling? I'll explain everything. Do not worry, ये सब थर्मो के है सर. Actually, applied thermodynamics is applied thermodynamics. Word itself is applied thermodynamics. Thermodynamics, thermodynamics का ये application है सर. ठीक है, no problem at all. So then 4 to 1 is constant pressure heat absorption. ठीक है सर. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, थ्रॉटलिंग और आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन. ठीक है सर, एक बार देख लीजिए सर. देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज आई विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट. लेट मी एक्सप्लेन इन ए क्रिस्टल क्लियर मैनर. जस्ट आई हैव गिवन द आउटलाइन ऑफ द साइकिल. नो, my dear students, a cycle is said to be a reversible cycle only when each and every process in a cycle, each process is reversible. एक साइकिल को रिवर्सिबल तभी कहेंगे जब हर एक प्रोसेस साइकिल का रिवर्सिबल है. कैन आई कॉल दिस वीसी साइकिल एज अ रिवर्सिबल साइकिल? बताओ सर, बोलो. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. कैन आई कॉल वीसी साइकिल एज अ रिवर्सिबल साइकिल? दिस इज माय क्वेश्चन. Someone said no. Someone said no, but why? This is not a reversible cycle. The reason being, we will be seeing that throttling is an irreversible process. There is a friction in throttling and it is an irreversible process. So, even though other processes are reversible, अगर एक ग्रुप में एक भी बदमाश है, वो कंप्लीट ग्रुप इज अ बदमाश ग्रुप. सो अगर ग्रुप बेस्ट ग्रुप चाहिए तो ईच एंड एवरीवन शुड बी बेस्ट. तो यहां पे दिस इज बदमाश, दिस इज इरिवर्सिबल, सो कंप्लीट साइकिल इज इरिवर्सिबल साइकिल. तो याद रखना सर. तो ही मे बी आस्किंग, वीसी साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. तो वीसी साइकिल इज, इट इज एन इरिवर्सिबल साइकिल. इट इज एन इरिवर्सिबल साइकिल. ठीक है सर, ओके, ग्रेट. इट इज एन इरिवर्सिबल स्केल. 100% करेक्ट, 100% करेक्ट. बिकॉज ऑफ दिस देखेंगे व्हाई दिस, क्या हो रहा है एक्चुअली. मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार देख लेना सर, एक बार देख लेना. रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, दिस इज अकरिंग इन ए डिवाइस नोन एज कंप्रेसर. वाह, पावर आ गया रे, पावर आ गया रे. बहुत बढ़िया, वाह, मजा मजा. चलो, चलो, विल स्टार्ट.
ओके सर, ओके सर। हाँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ये किसमें हो रहा है सर? कंप्रेशन, कंप्रेसर में। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, it is occurring in a device known as condenser. I will explain everything. Throttling or isenthalpic expansion, it is occurring in a device known as expansion device. And constant pressure heat absorption, it is occurring in a device known as evaporator. अब देखो एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा सर, इट्स माय प्रॉमिस। व्हाट आर द फोर डिवाइसेस इन वीसी साइकिल सर? क्या क्या फोर डिवाइसेस है? देखो अभी बताता हूं, अभी बताएगा, अभी बताएगा। कंप्रेसर, कंडेंसर, expansion valve or expansion device, and evaporator. These are the four devices that we use: compressor, condenser, expansion valve, and evaporator. Compressor, condenser, expansion valve, and evaporator. देखो कहां से, देखो पहले कंप्रेसर में से मैं आपको लाइन डायग्राम बताऊंगा। इधर देखो, मान लो ये मेरा कंप्रेसर है सर। What type of compressors are used? We have different types of compressors, reciprocating and rotary. दोनों भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। राइट नाउ जस्ट कंप्रेसर बोलो सर। देखो रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है, 0.1 पे अंदर आ रहा है, रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कौन करना कंप्रेस? देखो एनर्जी इनपुट इज गिवन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन, सो विद दिस एनर्जी वी कंप्रेस इट, तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। सो देयरफॉर बिकॉज द फ्लूइड इज, ये सब क्यों कर रहे हैं? नाउ वंस आई ड्रॉ द डायग्राम देन आई विल एक्सप्लेन फिजिकली। ठीक है सर। तो रेफ्रिजरेंट 1 पे अंदर आ रहा है, उस रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेस किए, तो 1 इज बिफोर कंप्रेशन, 2 इज आफ्टर कंप्रेशन। कैसा कंप्रेस करेंगे? एनर्जी इनपुट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंप्रेसर इज कपल्ड विद अ मोटर एंड कंप्रेसर शाफ्ट इज कपल्ड विद अ मोटर शाफ्ट। मोटर घुमा रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू दिस मोटर एंड द मोटर इन टर्न रन्स द कंप्रेसर एंड इट इज कंप्रेस। वेरी गुड सर। तो कंप्रेसर में होता क्या है सर? हाई प्रेशर फ्लूइड बाहर आता है, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाते हैं। ओके राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट सर? इट इज कंडेंसर। I'll explain everything, चिंता ना कर। तो कंडेंसर, सो एट 2, देखो 2 पे ये अंदर आ रहा है सर, 2 पे अंदर आ रहा है एंड इट इज लीविंग एट 3। ठीक है सर। एंड देयर इज, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होता है सर, हीट रिजेक्शन होता है सर, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होता है सर, बिल्कुल। 2 to 3 इज हीट रिजेक्शन, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हो रहा है। मेरा रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट कर रहा है। कभी आप देखिए सर, व्हेन यू टच्ड द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर आपको गर्म लगेगा, मींस माय रेफ्रिजरेंट इज रिजेक्टिंग हीट टू सराउंडिंग्स। ये हीट कहां जाएगा? दिस इज गोइंग टू सराउंडिंग्स। वेरी गुड। देन वी हैव एक्सपेंशन वॉल्व, बोलते हैं इसको एक्सपेंशन डिवाइस। सारे बताऊंगा सर, व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब, ये सारे बताऊंगा, पहले सुनते जाना। एक्सपेंशन डिवाइस किस पॉइंट पे अंदर आ रहा है सर? 3। एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग, इसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं, इट इज लीविंग एट 4। देन एट 4 इट इज एंटरिंग अ डिवाइस नोन एज इवेपोरेटर। 4। देन एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन इवेपोरेटर? देखो दिस इज माय स्टोरेज। तो स्टोरेज से मित्रों, स्टोरेज से मेरा रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट रिजेक्शन, इसको Q1 भी बोल सकते हैं। ओके, स्टोरेज से हीट ले रहा है, उसके बाद हीट लेने के बाद इट इज कमिंग आउट 4 से 1, देन इट इज बैक टू द compressor. This is the line diagram of a VC cycle. Have you understood the line diagram, sir? So it is a steady flow, sir. कंप्रेसर में से फ्लूइड कंडेंसर में जा रहा है, कंडेंसर में से एक्सपेंशन आ रहा है, एक्सपेंशन में से इवेपोरेटर, इवेपोरेटर में से बैक टू, तो ये साइकिल चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो देखो रेफ्रिजरेंट इज कमिंग, टेकिंग हीट, ध्यान से सुनिएगा सर, फिजिकली फील करो।
रेफ्रिजरेंट इज कमिंग, टेकिंग हीट, देन रिजेक्टिंग टू सराउंडिंग्स, स्टोरेज से ले रहा है और सराउंडिंग्स को दे रहा है विथ वर्क इनपुट। आप जानते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर इज पॉसिबल ओनली विथ एनर्जी इनपुट। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट अगर देना है तो ये वर्क इनपुट चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली सर। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा समझेंगे सर। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों कंप्रेस करना पड़ रहा है, व्हाई द एनर्जी इनपुट इज टू बी गिवन। लेट अस डिस्कस ऑल दिस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आप लोगों को अभी मैं डायग्राम, पीएस डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम या पीएच डायग्राम कुछ नहीं बोला सर, सुनते जाना। हाँ, is there sir, is there high pressure of yes, exactly, in condenser is a condenser में we assume that there are no pressure drops, तो it maintains the constant pressure। ठीक है, अब हो क्या रहा है मैं बताता हूं सर। यू मे बी आस्किंग अ क्वेश्चन, सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक स्टूडेंट सेड, अब मैं बताता हूं सुनो, एक्चुअली हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है एक बार देखेंगे, सुनो केयरफुली। इमेजिन, बहुत ध्यान से सुनो, I want to maintain 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन द स्टोरेज। मान लो मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, इससे लोअर भी मेंटेन करेंगे, लेकिन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कर रहा हूं, व्हाई टू गो फॉर माइनस, तो 10 डिग्री मेंटेन करना है। इमेजिन सराउंडिंग्स आर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो the higher temperature is 35 and the lower is 10, the lower temperature I am maintaining 10 डिग्री। चलो एक बार देखो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो स्टोरेज है सर, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है सर, 35। सो 35 इज हाई टेम्परेचर, 10 इज लो टेम्परेचर, हाई से लो हीट अंदर आएगा, हाई से लो हीट अंदर आएगा, तो इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। करेक्ट सर। हाई से लो, बिकॉज सराउंडिंग इज एट हाई टेम्परेचर, दिस एट लो, हाई से लो हीट अंदर आएगा। जब हीट अंदर आएगा तो इट्स टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड एट 10, तो वॉट एवर द हीट इज एंटरिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो हीट निकाल रहा है, वो हीट निकाल रहा है, वो हीट निकाल रहा है, वो हीट निकाल रहा है। कौन ले रहा है सर, कौन ले रहा है सर, बताओ, आप बताइए। हु हैज टू टेक, मेरा रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आके रेफ्रिजरेंट हीट लेगा। मुझे बताइए सर, what should be the temperature of the refrigerant in the evaporator। तो रेफ्रिजरेंट तो हीट ले रहा है, तो हीट कैसे लेगा वो, मेरे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए, देन ओनली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगा। नहीं आया समझ में, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द इवेपोरेटर, आप बताइए सर। मित्रों, मित्रों, हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो होगा, तो यहां पे जो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए। चलो मान लो जस्ट इमेजिन, उसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का, ये स्टोरेज की बात नहीं कर रहे, स्टोरेज इज एट 10 डिग्री, स्टोरेज इज एट 10 डिग्री, तो जो फ्लूइड आ रहा है, द वर्किंग फ्लूइड विच इज कमिंग, मान लो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या करेगा सर, इफ द रेफ्रिजरेंट इज कमिंग एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या करेगा, इधर से हीट लेगा, हाइट से लो हीट लेके अब जाएगा, मतलब लोअर टेम्परेचर से वो ले चुका है सर। अब ये मत पूछो सर इसका टेम्परेचर कैसे घट गया, यहां आने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं। अब यहां 4 डिग्री कैसे आया अभी मत पूछना सर, मैं यहां से व्हेन आई कम बैक टू दिस पॉइंट तब पूछिए मेरे से ये क्यों 4 डिग्री हुआ। राइट नाउ, इमेजिन राइट नाउ द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, मेरे प्यारे बंधुओं, राइट नाउ द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 4 डिग्री, 4 डिग्री पे अंदर आ रहा है, सराउंडिंग दिस स्टोरेज इज 10, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, यहां से हीट ले रहा है, हीट लेके जा रहा है। वेरी गुड सर। अब जो हीट लिया, वॉट एवर द हीट इज टेकन, वो हीट कहां देना चाहिए सर, इट इज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस, वो जो हीट लिया उसको कहां देना चाहिए सर, इट हैज अब्सॉर्ब्ड Q2 अमाउंट ऑफ हीट एंड दैट हीट शुड बी गिवन वेयर। बोलो सर। आई एम वेटिंग सराउंडिंग्स, वेरी गुड सर। क्या आपके मन में क्वेश्चन नहीं है, जब वो हीट ले रहा है, ये तो सेंस लेटेंट हीट ले रहा है, तो मान लो या हीट लेने के बाद 4 या 5 डिग्री पे आया समझो, बिकॉज लेटेंट हीट ले रहा है, वेन एवर द रेफ्रिजरेंट इज टेकिंग लेटेंट हीट उसका टेम्परेचर में बदलाव नहीं आएगा। मान लो वो सेंसिबल हीट भी ऐड हुआ, लेट्स से इट इज कमिंग आउट एट 5 डिग्री,
कमिंग आउट एट 5 डिग्री। क्या ये जो हीट लिया, देखो यहाँ पे देर इज अ फेस चेंज, तो जो भी हीट ले रहा है वो लेटेंट हीट है। व्हेनेवर देयर इज अ लेटेंट हीट, विल देयर बी एनी टेम्परेचर चेंज? नो। सो मान लो लेटेंट हीट के साथ साथ कुछ सेंसिबल हीट भी लिया, समझो। लेट अस अज्यूम दैट along with latent heat some sensible heat is also added, so therefore after absorbing heat, let us say latent heat भी add होगा, and now it is at 5 degrees मान लो। can this heat, can the fluid refrigerant which is at 5 degree, can this refrigerant reject heat to surroundings? Surroundings तो 35 डिग्री पे है सर, मेरे सराउंडिंग्स तो 35 डिग्री पे है, लेकिन मेरा सिस्टम अभी रेफ्रिजरेंट तो 5 डिग्री है, तो हाउ कैन इट रिजेक्ट हीट फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर? वो तो रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा सर। नहीं आया सर। अरे वो स्टोरेज से लेने के बाद इट्स टेम्परेचर इज 5 डिग्री, बट दैट हीट शुड वॉट एवर इट हैज टेकन, जो भी लिया उसको 35 पे छोड़ना है। लेकिन कैसा छोड़ेगा सर? उल्टा होगा ना, हाई टू लो उल्टा आएगा, लेकिन मुझे ना इधर से उधर करना है, तो क्या करूं मैं, बोलो आप बताइए। नाउ यू टेल मी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल एनर्जी देके आर्टिफिशियली इसका एनर्जी लेवल बढ़ा रहा हूं। एक्सटर्नल जो हीट ले चुका है, आफ्टर टेकिंग हीट इट एंटर्स द कंप्रेसर, आर्टिफिशियली बाहर से मैं एनर्जी दे रहा हूं। वंस आई गिव द एनर्जी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेशन के कारण। नाउ इट्स टेम्परेचर इज आफ्टर कमिंग आउट, लेट अस से इट इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्टिफिशियली इसका एनर्जी मैं बढ़ा दिया एक्सटर्नल वर्क इनपुट देके, बिना वर्क इनपुट से काम चलेगा ही नहीं, तो इसका एनर्जी में बढ़ाया सर। अब क्या होगा, इट इज एट 35, सराउंडिंग्स आर इट इज, माय रेफ्रिजरेंट इज एट 45, सराउंडिंग्स आर एट 35, तो क्या होगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस मेरा रेफ्रिजरेंट रिजेक्ट करेगा हीट, रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन रिजेक्ट करने से कैन इट रीच द लोअर टेम्परेचर? नहीं सर। तो हाइयर टू लोअर, एट द मोस्ट इट मे रीच, देखो 45 से अंदर आया सर, मान लो 45 से अंदर आया, रिजेक्ट कर रहा है, कहां तक रीच करेगा? एट द मोस्ट 35, उतना तो पॉसिबल ही नहीं। सो इट विल कम आउट, लेट अस से एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं आया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड सर? आफ्टर रिजेक्टिंग हीट इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स, और maybe it is a phase change condensation, no subcooling hai, so let us say it has reached, so maybe for around 40 or so, still it is high temperature। मैं अभी क्या कर रहा हूं सर, उस पे आने के बाद आर्टिफिशियली एक ऐसे प्रोसेस से उसका टेम्परेचर कम करवा रहा हूं सर। वंस द रेफ्रिजरेंट इज कमिंग, आर्टिफिशियली उसको एक प्रोसेस करवा के, थ्रॉटलिंग करवा के, दिस इज थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग करवा के उसका टेम्परेचर बहुत कम करवा रहा हूं, स्टोरेज से कम करवा रहा हूं, ताकि वो जब आएगा, सो आई एम अलाउइंग इट्स टेम्परेचर टू ड्रॉप फर्दर, इतना लो करवा रहा हूं ताकि जब वो आए यहां से लेगा। दिस इज द फिजिकल operation of the cycle. Have you understood, sir? Definitely, compression increases temperature and pressure, sir. Is the concept clear? Is the concept clear? मैं artificially work input देके, it has taken from the storage, storage से लेने के बाद work input देके उसका energy बढ़ाया, तो अब that energy will be more, temperature will be more than surroundings, तो reject करेगा। reject करने के बाद कंडेंसर में उसको आर्टिफिशियली अगेन एक प्रोसेस से इट्स विल ब्रिंग इट्स टेम्परेचर लोअर, लोअर देन द स्टोरेज, तो स्टोरेज से वो लेके फिर जाएगा, इट गोज ऑन, गोज ऑन, गोज ऑन, गोज ऑन, एंड ठंडा ठंडा, कूल कूल, लोअर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, कंटिन्यूअसली द साइकिल इज ऑपरेटिंग। जब ये रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूअसली काम कर रहा है अपना गोल अचीव करने के लिए, लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन दैट लोअर टेम्परेचर, व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, 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 व्हाई आर यू नॉट वर्किंग, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग? क्यों आप कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर रहे? एक दिन आते हैं सर, मैं 10 घंटे पढ़ लिया, बस खत्म, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा आपको। सो रेफ्रिजरेंट से सीख लो आप, रेफ्रिजरेंट इज ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली इन अ साइकिल। जब रेफ्रिजरेंट अपना दिल से काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, आपको भी करना चाहिए सर। इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? इज दिस ओके माय डियर स्टूडेंट्स? Is it? I'll explain sir, don't worry. सो एग्जाम में पूछ सकता, व्हाट इज द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, कहां से कहां जा रहा है? देखो देखो, कंप्रेसर से किधर जा रहा है सर? कंप्रेसर से इट गोस टू कंडेंसर। देखो,
कंप्रेसर, दिस इज कंप्रेसर, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस से इवेपोरेटर, compressor, condenser, expansion, evaporator, back to compressor, back to compressor. This is the flow. Is it clear, मित्रों? मजा आ गया सर? Very good, sir. Ganesh, how the temperature decreases in throttling? I think I had explained very clearly in thermodynamics, Joule-Thomson coefficient, Joule-Thomson effect. वहां पे बताया था. I had explained. If you want, I can explain. You can refer to my classes. When I taught so clearly in in throttling, temperature can increase, temperature can decrease, or it can remain constant. But यहाँ पे I'm going for a positive Joule-Thomson question. All this I had explained, sir. How physically I had explained. Physically I had explained, sir. मित्रों, I swear, physically I explained in Joule-Thomson question. कैसे? Throttling के दौरान क्या हो रहा है? एक बार देखो सर. I explained this Joule-Thomson quotient. I taught this is the inversion curve. ये सब इस रीजन में all this I had explained. But ये सब आप थर्मो में देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. So आपको ये साइकिल समझ में आया सर? Okay. If you say okay, then I'll proceed, sir. Now you tell me. एक बार मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करता हूं. देखो देखो. You should tell, sir. मेरे साथ रिपीट करना है आपको. What is this, sir? Anyone? It is reversible adiabatic compression, that is isentropic compression in compressor. उसके बाद this is condenser. In condenser what is happening? 2 से लेकर 3 तक आप बता सकते सर कंडेंसर में क्या हो रहा है? There is a rejection of heat. Please note down that condenser and evaporators are heat exchangers. मतलब कंडेंसर इवेपोरेटर में सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है सर. आइदर माय वर्किंग फ्लूइड एब्जॉर्ब्स लाइक इवेपोरेटर और माय वर्किंग फ्लूइड रिजेक्ट्स लाइक कंडेंसर. तो यहां पे हीट सराउंडिंग्स को जा रहा है सर. देन दिस इज expansion valve or throttling valve, sir. Okay. उसके बाद evaporator. And from the evaporator, it is going back to one. तो यहां पे क्या हो रहा है सर? There is a storage. From the storage, it is absorbed. And already you know, whatever the heat is taken from storage, we also call it as refrigeration effect. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? अब देखते हैं. What is point one? Point one, you can mention in two ways. Every point can be mentioned in two ways. Mitro, point one. One is entry to the compressor or exit of evaporator. One is entry to the compressor or exit of evaporator. Entry to compressor or exit of evaporator. Let's take two. Point two. What is two? Two is exit of compressor or entry to the condenser. Exit of compressor or entry to exit, compressor का exit or entry to the condenser. Three. What is three? Three. Exit of condenser. Condenser का exit or entry to the expansion valve. Condenser exit or entry to expansion valve. Last but not least, fourth, entry to the evaporator. Four, entry to the evaporator or exit of expansion valve का exit
एक्सपेंशन वाल्व का एग्जिट और एंट्री टू द इवेपोरेटर. Exit of expansion valve or entry to the evaporator. Is this correct? If this is correct, I'll proceed, sir. Every point can be mentioned in two ways. Every point can be mentioned in two ways. Is it okay, sir? अब देखो, let us represent this on different cycles. लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, अब देखो सर, देखो एक बार, if I take compressor as a control volume, क्या हो रहा है सर? The fluid is entering and the fluid is leaving. Can I say the mass is crossing the boundary? Refrigerant अंदर आ रहा है. After compression, there is energy transfer. It is crossing. So can I call this as open system? Yes, sir. If I take condenser, what is happening, sir? Fluid अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, and fluid बाहर जा रहा है. There is a mass flow across this device, so it is an open system. If I take expansion valve, fluid is entering and the fluid is leaving. And if I take evaporator, fluid is entering and fluid is leaving. So every device can be treated as a steady flow device. Every device can be treated as a steady flow device. ठीक है सर. Now will, तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा सर. अभी मैं I have not represented on pH diagram, PS diagram, HS diagram. Don't worry, all three plots clarity से बताऊंगा सर. पहले will start. So अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मतलब if you say yes then I'll proceed सर. चलो represent करेंगे सर. कोई बात नहीं सर. Let us represent the cycle. Now it is a TS diagram. You tell me what is the state of the fluid here. It is complete liquid, and this region is also known as subcooled or undercooled region. यहाँ पे पूरा liquid रहेगा. This curve is known as saturated liquid curve, and this is known as saturated liquid curve. Sorry, saturated liquid curve, and this is saturated vapor curve, and this is known as critical point. तो इसके ऊपर liquid directly vapor में convert होता है सर. Leave it. यहाँ पे you have both liquid and vapor, and यहाँ पे you have only vapor. This region is also known as superheated region, wet region, and subcooled or undercooled region. ठीक है सर. All this you will be studying in thermodynamics. तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या फिर ये भी पढ़ाओ? नहीं ना सर. हाँ, देखो, let us discuss simple, standard or saturated VC cycle now. Simple or standard or saturated VC cycle. मेरे प्यारे दोस्तों, whenever I use the word simple or standard or saturated VC cycle, the entry to the compressor, जो point 1 है, just observe here, 1 is entry to the compressor, we take entry on saturated vapor curve. दोबारा बता रहा हूं, ये point इधर भी हो सकता, ये पॉइंट इधर भी हो सकता, लेकिन व्हेन आई से सिंपल साइकिल और सैचुरेटेड साइकिल और स्टैंडर्ड साइकिल, मेरा पॉइंट इट विल बी हियर ओनली. मतलब बिफोर कंप्रेशन my entry to the compressor is on saturated vapor line, saturated vapor line इस पे है. Now what is 1 to 2 processor? एक बार देखना, what is 1 to 2 processor? मेरे प्यारे दोस्तों, what is 1 to 2 processor? 1 to 2, reversible adiabatic isentropic compression. ठीक है. Isentropic compression. What is isentropic? Constant entropy. Entropy constant. Entropy constant. Constant entropy. देखो, constant entropy means vertical line. तो vertical can be upward,
vertical can be downward, vertical can be upward, vertical can be downward. तुम बताओ सर, क्या मैं कंप्रेशन में पॉइंट टू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? इट इज अ कंप्रेशन. ड्यूरिंग कंप्रेशन एनर्जी इनपुट इज गिवन, सो फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा सर, फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा, देयरफॉर इट विल मूव अप. This is 1 to 2 process. एक बार just see the state of the fluid. Before compression, it is a saturated vapor. After compression, it is in superheated state. Compression के बाद जो fluid आ रहा है high temperature पे superheated vapor, it is the saturated vapor. This is 1 to 2 process. Is 1 to 2 clear, sir? क्या पूछता है ये? In each device, what is the refrigerant condition? Whether it is wait, sir, wait, Aditya. I'm coming to your point. Yes, देखो. Now, what is 2 to 1 to 2 is, ये किस डिवाइस में हो रहा है? There is a work input, and this is occurring in compressor. देखो, 1 to 2 ये कंप्रेसर में हो रहा है सर, कंप्रेसर में. And what is 1 to 2? एक सेकंड. What is 1 to 2? रिवर्सिबल एडिबिलिटी कम. अब 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. बहुत बढ़िया. कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. मेरे प्यारे बच्चों, इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव सीन ऑन टीएस डायग्राम. मेरे प्यारे बच्चों, ऑन टीएस डायग्राम देखो एक बार. दिस इज अ कॉन्स. अगर आप टीएस डायग्राम देख रहे हैं, these are constant pressure lines. These are constant pressure line. इस प्रेशर से ये प्रेशर ज्यादा है, सो दीज आर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ऐसे भी जा सकते या फिर ऐसे भी आ सकते हैं सर. वेरी गुड. कंडेंसेशन का मतलब होता है हीट रिजेक्शन. जब फ्लूइड अपना हीट को खो रहा है तो क्या होगा सर? माय वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है सर जी? बोलो सर जी. यस और नो? यस और नो? यस. अब देखो, नो आई यस सर. नाउ this is 1 to 2 compression हो गया सर. What is 2 to 3? Constant pressure heat rejection. देखो, at a constant pressure the heat is rejected. So this is point 2 which is entry to the condenser. It is rejecting heat. तो after rejecting heat मेरा वेपर क्या हो रहा है सर? It was in vapor state. अब वेपर क्या हुआ सर? अब ये लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट. सो व्हेन आई से, ध्यान से सुनिएगा सर, व्हेन आई से स्टैंडर्ड साइकिल, आई विल बी स्टॉपिंग हियर. यू कैन आल्सो कम डाउन, यू कैन आल्सो कम डाउन. उसको बोलते हैं सब कूलिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा. चेंजेस दैट आर टू बी मेड इन वीसी साइकिल. तो अब व्हेन आई से स्टैंडर्ड, यहीं पे रुक जाना. व्हेन आई से स्टैंडर्ड, पॉइंट 1 यहां पे. व्हेन आई से स्टैंडर्ड, पॉइंट 3 पे. दिस 2 to 3 किस डिवाइस में हो रहा है सर? आप बताइए. दिस 2 to 3 इज अकरिंग इन विच डिवाइस? This 2 to 3 is occurring in condenser. तो condenser में there is a heat rejection. Condenser में there is a heat rejection. ये हो गया सर. Now what is 3 to 4? 3 to 4 is throttling. Throttling हम थर्मो में पढ़े थे. Throttling is an irreversible adiabatic process. तो throttling में irreversible होने के कारण सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है. इरिवर्सिबल है तो मुझे पाथ पता नहीं सर. इसीलिए अब क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एंड एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. देखो 3 पॉइंट मित्रों, 3 का एंट्रोपी यहां पे है. तो व्हाट शुड बी द एंट्रोपी आफ्टर थ्रॉटलिंग? थ्रॉटलिंग इज इरिवर्सिबल, उसका एंट्रोपी बढ़ना चाहिए. सो ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एंड एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. सो देयरफॉर it should be somewhere here mitro. So 3 to 4 is throttling. Why are you showing by broken lines? Because I do not know. It's not because mitro, it's not because it is irreversible you are showing by dotted lines. It's because you do not know the path. आपको path पता नहीं है, इसीलिए I am showing by broken line. इसीलिए I am showing by broken line. It is throttling. रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर घट गया सर. Now you have a storage. Now you have a storage. So from the storage my refrigerant is absorbing heat. Storage से, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कम है. Compared to this its temperature is low. That's why at a constant pressure it is absorbing heat. In two phase region, इसको बोलते हैं two phase region में. In two phase region constant temperature and constant pressure are same. एक बार देख लीजिए. This is a constant pressure line.
तो एक बार देखो टू फेज रीजन में यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर लाइन एंड प्रेशर लाइन इज सेम ओनली इन द टू फेज रीजन, सो देयरफॉर इट इज एब्सॉर्बिंग हीट। जब वो हीट लेता है तो मेरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। लेटेंट हीट ले रहा है सर, लेटेंट हीट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीसी साइकिल। वॉट एवर द हीट इज एब्सॉर्ब वी कॉल इट एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इज द साइकिल क्लियर सर? हो गया सर? अभी एक 15 मिनट लेके छोड़ देता हूं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए सर। If you say yes, then I'll proceed, sir. Oh, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, हाँ कोई बात नहीं। Is it okay, sir? हाँ, अब समझ में आया सर? Yes. Now, reversible adiabatic compression, constant pressure heat ejection, throttling and constant pressure heat absorption. सर आपने तो पीएच डायग्राम एचएस डायग्राम नहीं बताया, रुको जरा सबर करो, सब चीजें आ जाएंगे। ये मेरा साइकिल है सर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द स्टेट ऑफ फ्लूइड at the inlet to the compressor? Which one is inlet to the compressor? One. So it is saturated vapor. What is the state of the fluid at the entry to the condenser? Two is exit of compressor or entry to the condenser. Two is exit of compressor or entry to the condenser. It is superheated vapor. What is the state of the fluid at point 3? 3 is exit of condenser or inlet to the expansion valve. It is saturated liquid. What is the state of the fluid at the inlet to the evaporator? It is wet region. इसको wet region बोलते हैं sir. It is wet region. So it is both liquid vapor are existing. This 4 can also be mentioned as exit of expansion device. तो expansion यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से exit हो रहा है, exit हो रहा है, exit हो रहा है, तो यहाँ exit है सर। expansion का exit is in wet region, liquid vapor region. So यहाँ तक सबको clarity आ गया सर? Sir, how will we ensure saturated vapor condition? Very good. We know one thing, my dear students, how much heat is to be absorbed, what is the mass flow rate. Based on that, you have fluid properties. You will be balancing and manipulating in such a way so that I can find easily, sir. I can do that. I can do that. उसके लिए कोई टेंशन मत लेना. Because I have so many parameters which we can control: mass flow rate, enthalpies, and based on that, how much is the load. Based on that, I can easily calculate. I can easily ensure there will not be any problem, sir. Is it okay? Is it okay, sir? Now, okay, to this साइकिल शायद इसको बोलते हैं सिंपल साइकिल और स्टैंडर्ड वीसी साइकिल। बात समझ में आ गई? सो अब हम क्या करेंगे सर? assumption, so analysis of the cycle. Before you make analysis of the cycle, there are some assumptions made. अगर कोई भी स्टूडेंट assumptions पे ध्यान नहीं देता है, गया। मैं बताता हूं सर, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ assumptions, वो गया। बोलो एक बार, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बोलो एक बार। अगर कोई ध्यान नहीं देता है, गया। मैं बताता हूं सर, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ assumptions, वो गया। बोलो एक बार, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बोलो। गुड, अच्छे बच्चे हैं। assumptions, each device is treated as a steady flow device. Each device is treated as a steady flow. Second, kinetic energy and potential energy changes are neglected. Very good, sir. मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार देख लीजिए सर, एक बार जस्ट ऑब्जर्व हियर।
एक बार लाइन डायग्राम देख लेंगे, विल सी द लाइन डायग्राम। ये कंडेंसर है सर, वन टू, दिस इज थ्री, this is 4, this is evaporator, this is 1, at 1 back to this, okay, this is the storage, ठीक है सर, this is heat absorption. I have one question sir, in this complete cycle, in this complete cycle, मित्रों एक बार देख लेना, इस कंप्लीट साइकिल में वर्क ट्रांसफर किस किस डिवाइस में हो रहा है सर, बोलिए। भूख लग रहा है, बच्चे गए, बोलो। बहुत केयरफुली आंसर कीजिए सर। देखो एक बार, यस कंप्रेसर में देर इज अ वर्क इनपुट, condenser is a heat exchanger. The purpose of condenser is just to reject heat. कंडेंसर में कोई वर्क नहीं होता है, सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है। इवेपोरेटर में इट इज ऑल्सो अ हीट एक्सचेंजर, मेरा रेफ्रिजरेंट हीट इज अब्सॉर्ब्ड, माय रेफ्रिजरेंट इज अब्सॉर्बिंग, इसमें कोई वर्क नहीं होगा, यहां पे कोई वर्क नहीं होगा, इट इज अ हीट एक्सचेंजर। हियर ऑल्सो देयर इज नो वर्क, हीट एक्सचेंजर। थ्रॉटलिंग, वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स, थ्रॉटलिंग में ना कोई हीट ट्रांसफर होता है ना कोई वर्क ट्रांसफर होता है सर। In throttling, neither there is a heat transfer nor there is a work transfer. So I have taught everything clearly in thermodynamics. तो यहाँ पे ना कोई वर्क है ना कोई हीट है, तो इसमें वर्क जीरो है, इसमें वर्क जीरो है, इसमें वर्क जीरो है। ओनली इन कंप्रेसर द वर्क ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। ये भी सवाल पूछ सकता है सर, इन वीसी साइकिल इन विच डिवाइस इज द वर्क ट्रांसफर टेकिंग प्लेस। वेरी गुड सर। ये आप बोले रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो व्हाट इज द हीट ट्रांसफर सर, जीरो। तो थ्रॉटलिंग में ना कोई वर्क होता है ना कोई हीट होता है। there are two devices where there is no work heat transfer, and there are two devices there are heat transfers. Now let us take 1 to 2. This is occurring in compressor, and this is reversible adiabatic compression. This is reversible adiabatic compression. बहुत बढ़िया सर। Now shall I apply, can I apply steady flow energy equation to this? क्या मैं steady flow energy equation इस compressor को अप्लाई कर सकता हूं सर? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, because each device is a steady flow device. मित्रों ठीक है, करो। डू यू नो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? मैं तो डिराइव किया था सर थर्मोडायनेमिक्स में, मैं बताता हूं व्हाट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। 1 से 2 तक H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2G प्लस W। अब मुझे ब्लेम मत करना, ये तो थर्मो में पढ़ेंगे, हम थर्मो में पढ़ेंगे। व्हाट इज H, एंथैल्पी। व्हाट इज C, वेलोसिटी। व्हाट इज Z, हाइट, potential energy height. What is Q, heat transfer. These are all at inlet 1 and these are at outlet. What is W, work. अब 1 से 2 तक ध्यान से सुनो सर। 1 to 2 already you know it is adiabatic, so what will be the heat transfer, zero. Kadun taka, kadun taka means remove, in Marathi kadun taka means remove, so as it is adiabatic, no heat transfer, kadun taka. You also made one more assumption, kinetic energy change, kinetic energy का change, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेग्लेक्टेड, तो बचा क्या है सर, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस वर्क, और वर्क इज इक्वल टू H1 माइनस H2। एक्सलेंट सर। और वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ H2 माइनस H1, और ये नेगेटिव इधर डाल देना, तो माइनस W इज इक्वल टू H2 माइनस H1। सो नेगेटिव वर्क का मतलब होता है वर्क इनपुट, नेगेटिव वर्क का मतलब होता है वर्क इनपुट, that is H2 minus H1. This is known as compressor work. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? सबको समझ में आई सर? Have you understood मेरे प्यारे बंधु?
बोलिए सर जी। दिन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। चलो, आपको एक एक मिनट के लिए गाना सुनाऊंगा, उसके बाद लेवल पे आ जाइए सर। 1 मिनट में एक गाना सुनाऊंगा, आप सुनो और विल कंप्लीट, डू नॉट वरी। चलो, आप लोगों को ना एंथुजियाज्म चाहिए ना कुछ चाहिए, क्या रे? जिंदा है? नो साउंड? माइक के पास साउंड नहीं आ रहा है? ये ऐसा कैसा होता रे? ऐसा कैसा होता रे? सर्वर, क्या ये बात नहीं, साउंड आ ही नहीं रहा है? क्या ये बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई सर? हैव यू अंडरस्टूड मेरे प्यारे बंधु? साउंड नहीं है? Yes, I am starting maths course. I am taking maths course. मैथ्स जबरदस्त करेंगे। मिनट के लिए गाना सुनाऊंगा, उसके बाद एक बार देखते साउंड क्यों नहीं है। 1 मिनट में एक गाना सुनाऊंगा, साउंड नहीं है। ये क्या हो रहा है? कंप्लीट, डू नॉट वरी। आ गया रे, मैं बताता हूँ, साउंड ही नहीं आ रहा। अच्छा, बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं। कब होगा? जो हो रहा है वो नहीं देखते, जो हो रहा है वो नहीं देखते, कब हो रहा। मैथ्स क्रैश कोर्स में कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस सुपर। साउंड इवेपोरेट हो गया। अभी आ रहा है सर? अभी आ रहा है? चलो, दिस इज इनकम, बट यहां पे एक रिक्वेस्ट है सर। देर इज अ रिक्वेस्ट सर, देर इज अ रिक्वेस्ट। द रिक्वेस्ट इज, मित्रों, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज H2 में नहीं आ रहा सर? क्या हुआ? एम आई ऑडिबल? हाँ, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज H2 minus H1, लेकिन you should not write H as CPT because this is not an ideal gas. It is changing its phase. For ideal gas, we can write enthalpy as CPT. Ideal gas के लिए हम enthalpy को CPT लिख सकते हैं, लेकिन ये ideal gas नहीं है सर. It's not an ideal gas. So therefore, please do not write H2 minus H1. Now you may be asking a question, sir, then how to find enthalpies? Don't worry. Table will be provided to you, table will be given to you, based on the table we can do everything. Is it okay? बोलो सर जी, आयन हमें उत्तर चाहिए। Is it okay? So सिर्फ H2 is, what is H2 sir? देखो देखो, H2 is anyone, it is the enthalpy at the compressor exit. And what is H1? H1, it is the enthalpy at the compressor inlet. Is it okay? Yes, 1 to 2 हो गया। अब आइए 2 to 3। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज 2 to 3? हीट रिजेक्शन। मित्रों देखो, लेट अस अज्यूम दिस एज अ कंडेंसर। एट 2 इट इज एंटरिंग, एट 3 इट इज लिविंग। सो यहां पे हीट रिजेक्शन हो रहा है सर। So apply steady flow energy equation. Instead of 1, I write 2. Instead of 2, I write 3.
1 से 2 इक्वेशन क्या होगा सर? H2 प्लस सी, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दोबारा बता रहा हूं सर, 2 to 3 H2 plus C2 square by 2 plus Z2G plus Q is equal to H3 plus C3 square by 2 plus Z3G plus W। वेरी गुड। तो आप बताइए, कंडेंसर इज अ हीट एक्सचेंजर। इन कंडेंसर देर इज ओनली हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर इज शून्य। Kinetic potential energy changes are neglected. Kadun taka. Kinetic potential energy changes are neglected. Kadun taka. So you are left with what, sir? देखो, H2 plus Q is equal to H3. So therefore, Q is equal to H3 minus H2, or Q can be written as minus of H2 minus H3, और ये माइनस को इधर लाना। मैथमेटिक्स कोर्स बुलंद करवाऊंगा सर। बुलंद मींस बुलंद विथ कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं कि फर्जी कोई मैट्रिक्स का इक्वेशन दिए वो रैंक फाइंड आउट करो, ये क्यों, वाई, विथ रीजंस आई विल एक्सप्लेन। तो कब स्टार्ट करूं सर? इस ये कोर्स के तुरंत बाद स्टार्ट करूंगा सर। साइक्रोमेट्री तुरंत होते ही अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स थोड़ी देर साइकिल्स रोक देंगे और मैथ्स में आ जाएंगे। नेगेटिव इधर लाओ। व्हाट डज नेगेटिव हीट मीन? हीट रिजेक्शन। नेगेटिव हीट को बोलते हैं हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन इज H2 minus H3। दिस इज द हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर। तो कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है ये हो रहा है सर। इज इट ओके? इज इट ओके सर? हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो सर, नाउ 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 is throttling. इन थर्मो आई टॉट यू, थ्रॉटलिंग में ना कोई हीट, रीजन के साथ बताया, रीजन के साथ ना कोई हीट ट्रांसफर होता है ना कोई वर्क ट्रांसफर होता है। अप्लाई करो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। H3 plus C3 square by 2 plus Z3G plus Q is equal to H4 plus C4 square by 2 plus Z4G plus W। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर जीरो। देन थ्रॉटलिंग में ना कोई हीट ट्रांसफर है ना कोई वर्क ट्रांसफर है, तो H3 is equal to H4। यस, दैट्स व्हाई वी कॉल थ्रॉटलिंग एज एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। थ्रॉटलिंग इज anisenthalpic process, is an isenthalpic process। इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। इज इट ओके मित्रों? So H3 is H4। last one, what is last one? 4 to 1, it is constant pressure heat absorption। This is occurring in evaporator। This is the storage, from the storage heat is absorbed, which we also call it as refrigeration effect। So at 4 the refrigerant is entering the evaporator, and at 1 it is leaving। Apply steady flow energy equation। The equation is H4, 4 से 1 अप्लाई करना है, प्लस C4 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z4G plus Q is equal to H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus W। Very good। So what is the work transfer in evaporator? Anyone in the class? What is the work transfer in work transfer evaporator में? Evaporator में what is the work transfer? Evaporator is a heat exchanger। कोई work नहीं होता है सर, वर्क नहीं होता है सर। काइनेटिक चेंजेस, पोटेंशियल चेंजेस काढून टाका। सो वी आर लेफ्ट विथ H4 plus Q is equal to H1, or Q is equal to H1 minus H4। And what is Q? Heat absorbed। Absorption is always positive, rejection is negative, so heat absorbed, which is also refrigeration effect, is equal to H1 minus H4। Observe this, all parameters are expressed in terms of, all the parameters are expressed in terms of enthalpy, but please don't write enthalpy as CPT, because it is not, the working fluid is not an ideal gas। चलो एक बार लास्ट विल सम अप। कंप्रेसर वर्क, कंडेंसर हीट रिजेक्शन, कंप्रेसर कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व,
which is also throttling, and evaporator. What is the work input, sir? H2 minus H1. And what is the heat rejection, sir? अभी तो बताया था heat rejection 2 से 3 हो रहा है, तो H2 minus, already I have given this. And in throttling, H3 is equal to H4. And what is evaporator? Heat absorbed, which is also refrigeration effect, is H1 minus H4. एक बार सारे देख लीजिए, H1 minus H4. Yes, exactly. These are the things. Absolutely fine. So if the work input is known, what will be the power input, sir? Just multiply with mass flow rate into work. Mass flow rate into work. So therefore, the power input is mass flow rate of refrigerant and the work is H2 minus H1. Similarly, what is the heat rejection rate? Heat rejection rate मतलब per unit time mass से multiply करना. Here, what is the refrigeration capacity? Mass flow rate into RE. Mass flow rate into RE is H1 minus H4. But my dear students, already H4 is also equal to H3. H4 is also equal to H3. I repeat, H4 is also equal to H3. So therefore, RC will be equal to m dot into H1 minus H4 is also equal to H3. So आप क्योंकि 3 to 4 is throttling, H4 H3 लिख सकते हैं. So from this, can I write the equation for COP? Can I write the equation for COP? ध्यान से सुनो. What is the equation of? I don't have place. तो color change करेंगे sir. COP is equal to RE by work input. What is RE? What is RE? Somewhere I have written RE is H1 minus H4, but H4 can also be written as H3. So H1 minus H4 by work input is H2 minus H1. ये याद रख लेना. If 4 parameters are given, I can easily calculate the why 4, only 3 are required because H1, H2, H4. What is H1? Enthalpy at the inlet to the compressor. What is H2? Enthalpy at the exit of compressor. What is H4? Enthalpy at the exit of expansion valve or enthalpy at the entry to the evaporator. So समझ में आया सर सभी को? Have you understood, my dear students? आज जो भी पढ़ाया मैं अब रोक दे रहा हूं सर. I am stopping the class. Today whatever I taught, have you understood? सीरियसली आई एम आस्किंग यू सर, क्या ये क्लासेस आपको फायदा हो रहा है सर? मेरे प्यारे दीनबंधु दुकाहरता, क्या ये क्लासेस फायदा हो रहा है सर? आप क्लियर क्लियर क्लियर. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मेरा एक सिंपल गुजारिश है आपके लिए. द रिक्वेस्ट इज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को, इफ यू हैव वॉच्ड माय क्लास कंप्लीटली, प्लीज लीव अ कमेंट. मतलब कमेंट्स यूट्यूब के कमेंट्स होते हैं ना, उसमें हाउ वाज द क्लास आपको करना है सर, सो दैट मुझे देखना है कि क्या क्या हो रहा है. यू शुड नॉट फॉरगेट दैट. देखो मजा 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 मजा, ये है अहा असली मजा 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 मजा, नॉट मजा, असली मजा मजा मजा. हाँ या ना में उत्तर दीजिए. सो मैथमेटिक्स शुरू कर रहा हूं सर. सर आप मैथ्स पढ़ा सकते क्या मेरे प्लस क्लासेस पे? इट इज द हाईली वॉच्ड कोर्स. एक बार देख लीजिए सर, हाईली वॉच्ड कोर्स. एक एक क्लास 1.5 लाख 2-2 लाख वॉच किए सर, मिनट्स. ओके चलो बाय बाय, थैंक यू. तो वी आर मीटिंग ऑन यूट्यूब ऑन मे बी सेकेंड इवनिंग और थर्ड. बीच में थोड़ा मैं गैप दे रहा हूं सर. ओके बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग. इज इट ओके मित्रों? Please do not forget to leave a comment. Okay? तो क्या मैं रोक सकता हूं सर क्लास को? क्या मैं रोक सकता हूं सर? चलिए बाय बाय, थैंक यू. बाय बाय, थैंक यू. आई एम एंडिंग द सेशन. चलो.